I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on statutory bank branch audit. And on this subject, our very respectable, honorable former president of ICI, CA Amarjit Chopraji is with us. I welcome you, sir. I also welcome another renowned speaker on bank audit, CA Ajay Jain ji. I welcome you, sir. I also welcome our very respected honorable CA Sanjeev Singhal ji, Central Council member of ICI. Welcome, sir. And Sunil Arora ji, Lokesh Gupta ji, another speaker, and all the attendee on behalf of Study Circle. As you know that there is no need to introduce our Guruji, Amarjit Chopraji. First of all, I congratulate him. He recently appointed as independent director on the board of SBI Mutual Fund Trustee Company Private Limited. I congratulate you, sir. And I request Sanjeev Singhal ji kindly address and introduce our Guruji within a short time. Sorry, sir, मैं आपको short time ही दे रहा हूँ, but as a member, आप Central Council है, मैं आपको ज़्यादा देर के लिए तो नहीं कह सकता, but sir, thank you, sir, and over to you, sir. Thank you, Rajesh भाई. शॉर्ट टाइम ही चाहिए जब टॉपिक बैंक ऑडिट का हो और अमरजीत चोपड़ा जी हो और साथ में अजय जैन जी हो, तो मेरा ख्याल किसी और का बोलना बेमानी है. सो थैंक यू राजेश भाई, एंड आई एम एड्रेसिंग दिस फर्स्ट प्रोग्राम आफ्टर बीइंग in the 25th council. So at the outset, I express my sincere thanks to all the members for voting me in to the 25th council. It was an overwhelming response, and I've been given the responsibility of being the chairman Auditing and Assurance Standard Board and chairman Sustainability Reporting Standard Board and a director of XBRL India by the Honorable President. And I'll discharge this responsibility with the best of my abilities and competence. We will be doing these bank branch audit programs with all the branches, and of course a program on the auditing standard, because the Honorable President want that we take auditing standard to the doorstep of every member. So we'll be doing full day program with each branch, talking about the auditing standards and also the expectations from the auditing fraternity. We'll be talking about that. Of course, Rajesh bhai is doing a great job in the CP study circle. We may not be able to go to the level of the CP study circle, but at least in each branch, we'll be doing this awareness program, making the short videos, 3 to 5 minute videos, also covering a lot of case studies or the case scenarios or the common myths for auditing or the commonly made mistakes in auditing regarding sampling, regarding physical verification, confirmations, etc. And your suggestions are welcome for the improved working of the Auditing Standard Board as well as the Sustainability Reporting Standard Board. Of course, it shall be our endeavor to increase awareness about ESG also. Now, ESG is a topic which is very widely talked about, but we need to take that awareness to the grassroots level for our membership, which shall be our endeavor to do so. And I'll remain available to the service of all the members and students. And as I said, discharge my responsibility to the best of my abilities. It's always an honor to speak about my mentor and guru, Amarjit Chopra sir. I've spoken this many times that I started speaking after, getting inspiration from Amarjit Chopra sir. I've seen him speaking in Vigyan Bhavan at a NIRC regional conference. That was in the, that was more than 15 years ago. And then I invited him to a program at the Ford School of Management. And Rajesh bhai, when you were talking about 185 people, there were only 8 members. And he came and gave his full time. So that is the dedication. And जैसे कहते हैं ना, हम इनके कायल हैं, इसलिए कायल हैं कि 8 members थे और तब भी इन्होंने एड्रेस किया और रादर जितना टाइम रिक्वेस्ट किया उससे ज्यादा टाइम अवेलेबल रहे. तो उनका जो ऋण है ना प्रोफेशन वो ऋण कभी चुका नहीं सकता. और सर ने हर प्रोग्राम मतलब थाउजेंड्स ऑफ वेबिनार्स लिए हैं पिछले कोविड के टाइम से वेबिनार और उससे पहले सेमिनार्स. तो पास्ट प्रेसिडेंट या आईफैक या मतलब किस कमेटी के सर चेयरमैन नहीं रहे, वो बताया ना, इनके बारे में बोलना सूरज को
दिया दिखाने के बराबर है। और सर बार बार ये बोलते हैं कि ज्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं दें, लेकिन बैंक ब्रांच मतलब बैंक ऑडिट का अगर कोई विषम पिता में है तो वो अमरजीत चोपड़ा जी हैं। जैसे हम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में गिरीश आहूजा जी को कहते हैं, उसी तरह से बैंक ब्रांच या बैंक ऑडिट का अगर कोई विषम पिता में हमारे प्रोफेशन में तो वो अमरजीत चोपड़ा सर है। तो सर आपके लव एंड अफेक्शन के लिए, आपकी जो सर्विस टू दी प्रोफेशन एंड सर्विस टू दी मैनकाइंड है, उसके लिए भी सल्यूट यू एंड वी विश यू वेरी गुड हेल्थ एंड जैसे 40 साल या 50 साल आपने प्रोफेशन को दिए, हम चाहेंगे, लालची तो हो ही सकते हैं कि अगले 50 साल भी आप प्रोफेशन को इसी तरह से देते रहें। एंड विद दिस आई एंड ऑफ कोर्स मतलब अजय जैन जी भी स्पीकर हैं, मुझे आपके बारे में सर बोलने को कहा गया है थोड़ा सा, और नहीं भी कहते तो भी मैं बोलता, मतलब जहां आप हो अजय जी के बारे में जरूर बोलिए। हाँ तो सर अजय जी और आपका सर बैंक ऑडिट में मैं कहता हूँ चोली दामन का साथ है। जहां आप हैं वहाँ अजय जी हैं, और अजय जी आपके बिना किसी प्रोग्राम में नहीं आते। और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर इन बैंक ऑडिट। और आपके आने से पहले मैंने रिक्वेस्ट भी की, आज ही हमने बैंक ऑडिट का पैनल, एक्सपर्ट पैनल एक बोला है। आज AASB की मीटिंग थी सर, इस काउंसिल ईयर की किसी भी कमेटी की पहली मीटिंग थी, तो हमने उसमें एक वो पैनल बनाएंगे, और इस बार थोड़ा सा बड़ा पैनल बनाएंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस आंसर हो सकें। तो आप दोनों के जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो काफी इनवैल्यूएबल रहेगा। और अजय जी को देखिए, बैंक ऑडिट मेरा टॉपिक नहीं है, बट जितना मैंने नाम अजय जी का सुना है, अजय जी को मैं पर्सनली अब करीब 4 साल से क्लोजली देख रहा हूँ, तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन अजय जी का इस फील्ड में है, बाकी में भी होगा। मेरा वास्ता बैंक ऑडिट रिलेटेड एस्पेक्ट पे ही पड़ा, एंड ही इज अ ग्रेट ह्यूमन। सो थैंक्स अजय जी फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम। और मैं राजेश भाई बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं और टाइम नहीं लेना चाहूंगा। आई नो मेंबर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड to this deliberation by Amarjit Chopra sir, and this may be the first program at least in North India on bank audit. I am not aware of, maybe Amarjit Chopra sir ज्यादा बता पाएंगे। और राजेश भाई का भी ये जादू ही है कि हर प्रोग्राम उनका फुल रहता है, इतना डेडिकेटेडली काम वो करते हैं। तो सर अमरजीत चोपड़ा सर, थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड राजेश भाई थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to share briefly or to speak briefly before the honorable members. Thank you, and over to you, Rajesh Bhai or Amarjit Chopra sir, as you. Thank you. And without taking too much time, once again I welcome our very very former president, Honorable C. Amarjit Chopraji, and over to Chopraji sir. Thank you, Rajesh Bhai, and thank you, Sanjeev ji. I think I am audible. Yes sir. Yes sir. Thank you, Rajesh Bhai, and thank you, Sanjeev ji, for all your generous words. Let me say that Sanjeev is a rising star on the horizons of this particular profession. The way he has conducted himself over the last couple of years, I think it is just remarkable. And I can only wish him all the success in all his future endeavors, whatever he does. And I can only assure him one thing, that wherever our role will be required, whenever it will be required, we shall be prepared to play that particular role. I can commit it on my behalf and on behalf of Ajay ji, without even asking him, for that matter. Thank you, sir. Thank you. Because I think we enjoy each other's confidence to that extent that we can commit on each other's behalf. Thank you, Unless someone is not well, that's a different matter. And today also I requested Ajay ji that probably I may not be able to speak for more than 45 minutes. Since I got the COVID last month, I've been having some throat problems. If I speak more, then it starts getting some kind of a problem. I did one mistake yesterday. I spoke for an hour and a half in independent directors program organized by Committee for Members in Industry, and night was a real nightmare for me yesterday. Anyway, that was my choice. I could have said no, but today I decided that I will not speak for more than 45 minutes. And I think we have shared our thoughts, myself and Ajay ji, and where I leave, Ajay ji will be able to take it over. Sunil Arora ji, I can see. Lokesh Gupta ji was there. Now his, of course, video is off, but I can say I can greet him.
And of course, there are 251 members otherwise who are attending this particular program. As Sanjeev ji said that Pusa Road Study Circle is synonymous with Rajesh Agarwal, and whatever program he organizes, it's a great success. And I can tell you, Rajesh ji, I don't know about India, but North India, this is the first bank audit program, and myself and Ajay ji, this is first program that we are addressing on bank branch audit for that matter. Thank you, sir. Thank you. There are certain developments which probably would be the members will be coming to know in a couple of days. There have been talks by the Reserve Bank of India that they want to reduce the number of the percentage of the advances to be audited from 90% to 70%. The Honorable President of the Institute, along with the PDC chairperson, have gone and met the Deputy Governor and the staff members. And the talks are on whether it will be reduced or it will not be reduced. Nothing can be said, but probably by 10th of this month, the panel is likely to go to the banks, and before that, the Reserve Bank of India will have to take a decision. And if this is reduced to 70%, in that particular case, I can tell you 1/3 of the branches will definitely vanish, so far as the bank audit is concerned. And in that particular case, I don't know what will be the fate of the various firms, whether there will be any vacancies or not this year. If that happens, if it doesn't happen, then I think it's a reason to celebrate for that matter. But it will be known only in a couple of days, in the days to come. And I think Ashwini Jindal ji has already joined, and he has already organized the talks on this particular topic as well. On this issue as well. But I will only like to say that I don't want to create a panic situation, but I just wanted to inform the members. But I am hopeful that probably this may not happen this year, this may happen next year. But one thing I can assure you, after next 5 years, if we are hoping that the branch audit would be there, we are living in a fool's paradise. That I've been saying for the last 10 years, and I'm saying now only a period of 5 years. Because the way the things are shaping up, I don't think the branch audit would continue for a longer period in the times to come. Probably there could be other audits coming from the banks and certain other firms, but bank branch audit as statutory audit form may not remain in the present format. Or even if it is to remain, I think the RBI will say if we leave it to the various banks, whatever percentage they want to get it audited, and whether the central auditors want to appoint the branch auditors or not. Yes, central auditors will not be given more than 20 branches. That also is a matter of fact. But probably that power will go to the banks to appoint or not to appoint, or when the banks may in turn give that power to the statutory auditors, whether they are comfortable with in appointing the branch auditors or they are not comfortable in appointing the branch auditors. This is all going to happen in the next 5 years. You can be rest assured that if anybody says that it is not going to happen, I think you should not live in that kind of situation. This is bound to happen under all circumstances, because the banks have spent on computerization. The identification of NPAs has become through the system. And I can only tell you, Reserve Bank of India has insisted on every bank today, in this year, last year, that by 30th of June, the system of identification of NPA had to be done through the system. And any bank which is not resorting to this, they will be fined very heavily by the Reserve Bank of India. But our suggestion to the Reserve Bank of India has been, wherever one has been able to talk informally, because I don't have the formal capacity to talk to anybody in the Reserve Bank of India, but wherever one has been able to get a chance to talk informally to the officials of the Reserve Bank of India, one has been able to convey to them that they need to differentiate between the private sector bank and the public sector banks, not from the deposits point of view, not from the advances point of view, but from one particular point of view, that all these private sector banks were computerized from the day one, basically, and all their records are digitized. So there probably the identification of NPA, the verification of the documents
can be done at the head office. Whereas in the case of the public sector banks, the records are not digitized. For that particular purpose, the records have to be verified at the branch level or at certain other offices wherever those records are stored, but not at the central office level. So that is why the need for the branch audit still remains. Most of the time, our excitement, even some of the council members would say that if the branches are not audited, the frauds will go undetected. There, the argument of Reserve Bank of India is very simple. Pardon me for saying it. Please tell us in how many cases the branch auditors have detected frauds. And if the branch auditors have not detected the frauds, this argument fails right from the day one. So probably our argument has to be on different line. The audits will not be got conducted because the chartered accountants have to get work. Let's be very clear about it. The audits will be got conducted only and only if there is a value addition and by the chartered accountants during the course of the audit, and they can throw out certain points which are actually useful to the bankers. Our saying that the branch manager does not allow us to identify the NPA, the GM does not allow us to identify the NPA is not going to work. Let's be very clear about it. We have to do our duty and we must report the matters. And if we say here that the branch manager does not allow us to identify an account as NPA, then how do you react to the situation that why a private company wala will allow you to report something in your report? I think we bring a bad name to the profession ourselves by saying the branch manager does not allow us, the GM does not allow us. Then the promoter of a company will never allow you to qualify the report for that matter. And we are ourselves agreeing that on account of these pressures, we don't do it. And there we say that if we don't do it, then we will not get the bigger branches next year, we will be sent to the rural branches. Then if you don't, if you qualify the report in the case of a private limited company, probably the audit will go away. That's the argument that the other person will say. So let's stop taking these arguments. Let's start doing our job in a more professional manner, in a manner which befits our profession. If we want to remain relevant to the society, believe me, it is the high time that we should remain. Where ABG shipyard fraud has been committed, 22,842 crore rupees only. I'm again repeating the figure. 22,842 crore rupees siphoned off. And if this fraud has happened and that particular branch was being audited, it's not that that particular branch was not being audited. We can all say that there was a fault with the bankers, there was a fault with the, you can say the RBI inspectors. Those arguments don't work anywhere. We have to be guided by what our members are doing. And I think we have to perform to earn the respect. And we have to perform to say that we did it. You did not pay heed to it, that's a different matter altogether. I was today listening to one of the talks on code of ethics by Mr. C.V. Sajan. It was a video that some study circle has got recorded and hosted it. Beautifully done. Please listen to that talk by Mr. C.V. Sajan, what he has said. I think it's just wonderful, whatever he has said. So my humble submission with folded hands to all the members is, let us do our work. Forget what the bankers are doing, what the RBI inspectors are doing, what the clients are doing. In recent one of the cases, the court has ordered, you know what the court has ordered? And we all have been playing into the hands of the client. The court has ordered wherever the figures submitted to the banks were inflated in respect of the stocks and debtors, the chartered accountant has been arrested in that particular case along with the promoters. I think we all know about the case. It is only recent one. And this is something which I have been saying for ages, that we just can't turn our eye the other way around. There is no way that we will be able to do it. कि जी क्लाइंट फाइल कर रहा, मुझे क्या पता? क्लाइंट फाइल कर रहा भाई स्टॉक्स, अगर उसने लिमिट 300 करोड़ रुपए की ले रखी है, आपको पता है वहां पे स्टॉक्स कितने हैं, और अगर उसने 300 करोड़ रुपए की लिमिट ले रखी है, 50 करोड़ रुपए की लिमिट ले रखी है, आपको पता है कितने स्टॉक हैं, तो आपको ये भी पता है कि डीपी पर्पसेस के लिए उसने स्टॉक स्टेटमेंट क्या फाइल की होगी वहां पे.
तो सिर्फ ये कहते रहना कि सब ऐसे 240 कहता है, if I stumble upon some information, then only I will get into it. I keep on stumbling upon that information every hour, every minute. Forget about days or months. Unfortunately, we have become well-wishers of certain people, which is not going to work in the times to come. वो जीएसटी में कितने लोग अरेस्ट हुए, अब कल भी एक अरेस्ट हुआ ड्राइविंग में, कल की भी न्यूज है। तो भाई अपने आप को हम संभाल लें, अपना रास्ता खुद ढूंढ लें, ये मेरी आप सब लोगों से विनती है। अदरवाइज आई थिंक ये तो चलता ही रहेगा, जो कुछ चल रहा है। क्लाइंट ने तो जो करना उसने करना। आज कारों के अंदर हमें क्यों कहना पड़ा कि भाई पहले तो मैनेजमेंट सर्टिफाई करे कि 5 करोड़ से ऊपर की अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट है, तो उस केस में जो स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर की स्टेटमेंट फाइल कर रखी है हर क्वार्टर में, वो उसकी किताबों से टैली करती है। पहले मैनेजमेंट किया, उसके बाद ऑडिटर ने सर्टिफाई करना। अब आप कर लेंगे। नाउ यू विल बी एबल टू टर्न द आई द अदर वे अराउंड। हाउ विल यू बी एबल टू डू इट? नाउ यू विल हैव टू वेरीफाई व्हाट ही हैज फाइल्ड विद द बैंकर्स, एंड वन रीजन व्हाई दिस हैज बीन डन इज दिस, because the kind of fraud which happened in the banking industry. So my humble submission is, when I am talking of the bank branch audit cannot be treated in a routine manner. There is no way that I can keep on treating it as a routine assignment and yearly bonus, yearly lottery. No, it is not. It's a professional assignment that I am getting, and I must perform it absolutely professionally. I must have the documents. संजीव जी ने बात सैम्पलिंग की है, संजीव जी ने बात डॉक्यूमेंटेशन की है। मुझे वो सब चीजों पे नजर दौड़ानी पड़ेगी। I have no choice about it. Let's be very clear about it. कोई सूरत हाल नहीं। जितने भी सेंट्रल ऑडिटर्स भी हैं उनको भी वार्निंग है। I can forewarn them today. NAFRA is going to ask for those records in the times to come. क्योंकि हर बैंक जो है वो लिस्टेड है, लिस्टेड एंटिटी है, और हर लिस्टेड एंटिटी इज अंडर द डोमेन ऑफ नफरा नाउ। कोई सेंट्रल ऑडिटर नो सेंट्रल ऑडिटर कैन एस्केप टुडे। किसका नंबर किस वक्त आएगा किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात। सबके रिकॉर्ड तो मंगवाए जाएंगे कि बता दो भाई ऑडिट कैसे किया, सैंपलिंग कैसे की, डॉक्यूमेंटेशन कैसे की, ऑडिट एविडेंस आपने कैसे गैदर किया, हाउ डिड यू सेटिस्फाई योरसेल्फ विद रिगार्ड टू। ये तो होने वाला है। जितने पीएसयूज के ऑडिटर्स हैं, जो लिस्टेड पीएसयूज हैं, जितने आपके सेंट्रल ऑडिटर्स बैंक्स के हैं, जितने इंश्योरेंस कंपनी, सबका नंबर आना, एक भी अवॉइड नहीं कर सकते उसमें। हमारे किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि भाई मैंने अपॉइंटमेंट से पहले क्लाइंट की केवाईसी की या नहीं की। मेरे पास किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि मैंने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक किया कि उसका क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है, उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट्स कितनी हुई है, सेल टैक्स की रेट्स कितनी हुई है। आपको उसकी रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट में से मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। I can tell you, I must have refused at least 2 of the directorships only for the reason that I went through that particular report of the earlier auditors and notes to account, and I saw that the company was ready for the income tax purposes or for sale tax purposes, and I didn't accept. Why should I put my neck into that kind of a company? I think that's very important. तो मैं आपसे एक ही दरखास्त कर सकता हूँ कि भाई अब ये मान के मत चलना, और इसी वक्त किसी ना किसी, अगर आप बड़ी ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो और वो बड़ी ब्रांच इतनी बड़ी है कि आप शायद उस कैटेगरी में आ जाए जिसमें आप नफरा में फॉल करते हो, तो आपको भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यू मे हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सो लेट्स नॉट लिव इन ए डिफरेंट, यदि कुछ लोग हैं, 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, 500 लोग हैं जिनके ऊपर नफरा लागू है। नहीं, नफरा कितने लोगों के ऊपर लागू होगी, दिस वी मे नॉट एबल टू गेट। अभी नफरा ने ये कहा कि भाई इतने 1000 लोगों के अगेंस्ट केस चलाओ, क्योंकि उन्होंने वो नफरा 2 फॉर्म ही नहीं भरा। वो इंस्टीट्यूट चलाएगी या नहीं चलाएगी, बट हो सकता है कि एमसीए चला दे, हो सकता है नफरा चला दे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ
बैंक ऑडिट में सबसे जो क्रिटिकल एरिया है वो है कैश क्रेडिट अकाउंट। मैंने हर साल ये बात बोली, वेरिफिकेशन और चेकिंग ऑफ द कैश क्रेडिट अकाउंट। इस बार 3 सर्कुलर आए। 1 अक्टूबर 2021 का सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर। उसके बाद 12 नवंबर का शायद सर्कुलर आया है और एक 15 फरवरी का सर्कुलर आया। ये 3 सर्कुलर आप पढ़े बिना नहीं जा सकते किसी भी सूरत के अंदर। आपको आगाह तो करवाएंगे अजय जी, कई चीजों से रूबरू करवाएंगे, परंतु आपसे ये बता सकता हूं वो जो कई चीजें थी जो चल रही थी वो अब फिर तोड़ दी उन्होंने, बिल्कुल तोड़ दी। बैंकों को तोड़ दिया, बाकी तो आप हमारी बात तो छोड़ो, आरबीआई ने बैंकों को तोड़ दिया। और बैंक उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं। और ये मैं अजय जी को बोलूंगा कि अजय जी मेरे बाद आप ये जरूर टेकअप करिएगा कि क्या बैंक इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, whether the banks have the wherewithal to enter even implement this. I think that's a matter, and that should have been the matter of concern to the institute, क्योंकि सर्कुलर कोई नया थोड़ी ना। ईडीसी कमेटी करती, बैंकिंग कमेटी करती, जिस कमेटी ने भी करना था इस सर्कुलर के ऊपर, दे शुड हैव इंटरेक्टेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इम्प्लीमेंट कैसे होगा। और मेरे हिसाब से हर रिपोर्ट में डिस्क्लेमर आना चाहिए ऑडिटर का, हर रिपोर्ट में। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वन रिपोर्ट और बिगर रिपोर्ट और स्मॉलर रिपोर्ट, एवरी रिपोर्ट शुड हैव अ डिस्क्लेमर। उसको आपको कारण बताऊंगा अभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बात तो ये कही इस बार कि भाई एक काम करना, ये बड़ा रिवाज था कि जो फॉर्म होते हैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म या सैंक्शन के फॉर्म, उनमें ब्लैंक कॉलम बड़े रहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रीपेमेंट किस डेट से शुरू होगी और किस डेट को खत्म होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंटरेस्ट एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये कॉलम 90% केसेस में भरे हुए नहीं मिलते आप। उन्होंने ये आरबीआई सर्कुलर से ये क्लियर कर दिया है कि जितने तो नए केसेस हैं उनके लिए तो ये लागू हो गया 31 दिसंबर से। एक भी केस में आपके ये खाली नहीं हो सकता कोई कॉलम, ना तो इंटरेस्ट रेट का, ना फ्रीक्वेंसी का ना रीपेमेंट शेड्यूल का, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वेदर इट इज अ फ्लोटिंग रेट और इट इज अ फिक्स्ड रेट, कोई चीज आप ब्लैंक नहीं रख सकते हो नए केसेस में तो। और पुराने केसेस में उन्होंने ये कह दिया कि जो केसेस रिन्यूअल और रिव्यू के लिए आएंगे, जिस दिन रिव्यू आप करेंगे या रिन्यूअल करेंगे, ये फॉर्म पूरे का पूरा फिलअप होना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है इस बार देखने की, ये ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द सर्कुलर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच द बैंक्स आर सपोज्ड टू फॉलो। अगर कोई डॉक्यूमेंट अब आपको ब्लैंक मिलते हैं, then you must report it as much as you can. And it is a serious issue, very frankly, because what the banks have been doing, the banks have been playing कि आपने जिस वक्त कोर्ट में केस करने जाना उस वक्त आप वो कॉलम भरते थे, और कई केसेस में ये पता लगा कि जब सैंक्शन किया था तो रेट कुछ और था और जो आपने भरा हुआ वो रेट कुछ और है। तो आरबीआई ने ये कहा कि ये नहीं चल सकता भाई, जो कुछ भी है ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए आपके हर सूरत में, और वो बिल्कुल आप भर के लाइए जो भी आपने भर के लाना है। और दूसरा उन्होंने ये कहा जो जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश जितने हम पहले एसएम में 0, एसएम में 1, एसएम में 2 अकाउंट जो थे वो हम आइडेंटिफाई करते थे मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट जिसको आप बोलते हैं, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 0 जो है उसमें एक भी दिन का कहीं पर डिफॉल्ट नहीं है। 1 वाले में डिफॉल्ट है 60 डेज का, और एसएम में 2 में डिफॉल्ट रहता है 60 डेज से 90 डेज का। 90 डेज से ऊपर तो फिर गाड़ी चढ़ जाता आदमी, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फिर वो एनपी हो जाता, स्पेशल मेंशन अकाउंट में नहीं रहता। पहले हम उसको मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे करते थे, अब उन्होंने कहा ये ना तो मंथ एंड है ना क्वार्टर एंड है, जिस डेट को इंस्टॉलमेंट ड्यू है आप उसको हर रोज रन करेंगे
इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स has to be there in the system and the run for the special mentioned account has to be taken on a daily basis. और आप SM में 0, SM में 1, SM में 2 की डिटेल डेली बेसिस पे बनाएंगे, मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे नहीं बनेगी। क्या मतलब है इसका? इट इज नॉट एन इजी थिंग। इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो सिस्टम ये चेक करना है कि भाई इसमें इन्होंने एक्चुअली फीड भी की हुई है ड्यू डेट से या नहीं की हुई। ड्यू डेट ही अगर फीड नहीं की हुई तो SM में 0 या SM में 1 और SM में 2 निकालोगे कैसे आप? दूसरा उन्होंने एक और बात कर दी, उन्होंने ये कह दिया कि जो आपका कैश क्रेडिट अकाउंट भी है, कैश क्रेडिट अकाउंट में भी जो डिफॉल्ट है 90 दिन वाला, whether the limits has remained overdrawn compared to the drawing power or these have exceeded the sanction limits beyond a period of 90 days or where the credits in the account are not sufficient to meet the debits of the interest. पहले उसमें एक वर्ड था एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आपने पढ़ा हो कैश क्रेडिट में, ये चीजें आप देखा करते थे एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब उन्होंने कहा नहीं, ये डेट ऑफ बैलेंस शीट 0 ऑन ए रनिंग बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस आपको ये देखना है। अरे बैंक के पास सिस्टम है जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जो इंटरेस्ट लगा है आज तक का और डेबिट इंटरेस्ट जितना हुआ है उसमें डिफरेंस तो नहीं है कोई। और अगर इंटरेस्ट डेबिट ज्यादा हुआ और क्रेडिट कम हुआ, पहले क्या होता था आप क्वार्टर के एंड पे देख लेते थे, ईयर के एंड पे देख लेते थे। तो वो कहता ना, इट इज ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। ऑन गोइंग का बेसिस का मतलब ये जैसे SM में 0, SM में 1, SM में 2 आपने डिटरमिन डेली बेसिस पे करना, वैसे ये भी आपको डेली बेसिस के ऊपर ही करना है। रियल प्रॉब्लम, इट्स अ रियल चैलेंज इफ यू आस्क मी। मैं तो पूछना चाहूंगा अजय जी से कि अगर किसी के यहाँ स्टॉक रिटर्न, जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो तो आएगी मंथ एंड के ऊपर, और आपका जो डेट है अगर वो आपने डेली बेसिस पे निकालना है और उसने स्टॉक स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो वो तो 0 हो गई उसकी डीपी तो। और जिस दिन 0 हुई डीपी उस दिन आपका तो हो गया अकाउंट, जो भी जिस हाल में भी जाना। या इसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई बैंक ने कोई झूठी, तो ये नहीं कि वैसे ही डाल दी स्टॉक स्टेटमेंट पूरी की पूरी सिंपली बिकॉज ऑफ टू कवर अप दिस। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों केसेस में इसका मतलब ये कि डीपी भी मेरे पास डेली बेसिस पे होनी चाहिए, मेरे पास एक्सेस ऑफ डेबिट ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट कंपेयर टू द क्रेडिट्स इन अकाउंट भी डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए, और ये भी डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए सिस्टम के अंदर कि कितने केसेस में मेरी लिमिट एक्सीड हुई है। और वो फिर जिस दिन 90 दिन पूरे हो जाते हैं वो मुझे क्वार्टर एंड नहीं देखना, उस डेट को मुझे अकाउंट एंट्री करना। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया बिल्कुल अपने आप में कि अब आपने किसी भी सूरत में जो मेरा इंटरेस्ट लगता था टर्म लोन्स के केस में, टर्म लोन के केस में मेरा इंटरेस्ट लगता था, सपोज कीजिए ड्यू हुआ मेरा इंटरेस्ट 15 तारीख को, मैं उसका जब 90 दिन कैलकुलेट करता था तो फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर करता था 90 दिन कैलकुलेट, नथिंग डूइंग। 90 days has to be calculated from the date of the interest becoming due। जिस दिन ड्यू हो गया उसी दिन से 90 दिन है। ये सब चीजें सिस्टम में अगर प्रोवाइड करेगा बैंक तभी तो आप चेक कर पाओगे। अगर किसी भी चीज के ऊपर सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपको डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा हर सूरत में। अगर आपकी डीपी कैलकुलेट नहीं हो रही ऑन डेली बेसिस करेक्टली, आपको डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए। अगर सिस्टम आपको एक्सेस ऑफ डेबिट कंपेयर टू क्रेडिट नहीं दे रहा कैश क्रेडिट अकाउंट में ऑन डेली बेसिस, यू विल हैव टू गिव द व्हाट यू कॉल एज द
disclaimer so as that particular account is concerned. So that also you will have to take care of. तो ये सब डिस्क्लेमर्स की सिचुएशंस आ रही हैं आपके लिए. तो टर्म लोन्स के केस में भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इंटरेस्ट का जो डेबिट है जिस दिन आप करेंगे उसी दिन से वो ड्यू. और दूसरा उन्होंने ये कहा, ये जो 90 दिन का था ना पहले, कि जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसके बाद से 90 दिन, वो कहता नहीं जिस दिन ड्यू हो गया वो काउंट हो गया डे, उस दिन से ही ओवर ड्यू है. अगर 31 मार्च में 90 दिन पूरे तक हो रहे हैं आपके, अगर 90 दिन पूरे हो गए तो हो गए ना, खत्म है बात. मतलब कि देयर इज नथिंग लाइक द अदर वे अराउंड. और कुछ बड़ी अच्छी चेंजेस की जो कि सिग्निफिकेंट है मेरे अपने हिसाब से. अजय जी के कमेंट में जरूर चाहूंगा बाद में इसके ऊपर. उन्होंने कहा अगर आपने किसी को लोन दिया और उसको ये कहा कि भाई इंटरेस्ट पे हम तुम्हारे को मॉरेटोरियम दे रहे हैं, आज की डेट में 2 साल का मॉरेटोरियम दे दिया आपको इंटरेस्ट का. 2 साल के बाद किसी कारण से वो आपका अकाउंट एनपीए हो गया, इंटरेस्ट ना आने से हुआ, प्रिंसिपल ना आने से हुआ, किसी भी कारण से हो सकता वो अकाउंट एनपीए आपका. तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो अकाउंट एनपीए होगा, तो जब अकाउंट एनपीए होता तो जो इंटरेस्ट आपने रियलाइज नहीं किया होता वो आप रिवर्स करते हो इंटरेस्ट. उन्होंने कहा जो मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया आपने, और जो आपने खुद मॉरेटोरियम दे रखा था और कहा था कि हमें ये नहीं दोगे आप, उसको आप रिवर्स नहीं करोगे, वो आपका पड़ा रहेगा इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसिकली. हाँ, मॉरेटोरियम के बाद का जो इंटरेस्ट है जो आपने डेबिट किया और वो आपने रिसीव नहीं किया, उसको आप रिवर्स करोगे. परंतु मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है अगर वो नहीं आया हुआ, उसको आप रिवर्स नहीं करोगे. इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल इफ यू आस्क मी, एब्सोल्युटली लॉजिकल. क्योंकि आपने अलाउ किया मॉरेटोरियम. द बैंकर्स कैन डेफिनेटली गिव अ मॉरेटोरियम. और अगर बैंकर्स ने मॉरेटोरियम दिया, ये मान के दिया कि ये तो पार्ट ऑफ मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही है, जेस्टेशन पीरियड की कॉस्ट है ये, तो उसको आप रिवर्स नहीं करोगे बैंक में. आपने अगर जो रिवर्स करना है, जो उसके बाद का इंटरेस्ट है, मॉरेटोरियम के पीरियड का बाद का इंटरेस्ट है, अगर वो आपको नहीं आया है, in that particular case that interest will have to be reversed by you so far as this particular issue is concerned. एक उन्होंने और बहुत अच्छी बात कर दी. उन्होंने ये कहा कि अगर एक अकाउंट को आपने अपग्रेड करना है, एक फैसिलिटी को अगर अपग्रेड करना है, अगर आपने उसको 5 फैसिलिटीज दे रखी है, इस बात को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बार, अगर आपने उसको 5 फैसिलिटीज दे रखे हैं, उसके पास पैकिंग क्रेडिट है, उसके पास पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है, उसके पास कैश क्रेडिट भी है किसी अकाउंट की वजह से, उसके पास टर्म लोन भी है, उसके पास बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी है. अगर उसकी एक अकाउंट की वजह से अकाउंट एनपीए था, एक फैसिलिटी की वजह से अकाउंट एनपीए था, एनपीए हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में. तो उन्होंने कहा अगर सपोज कीजिए जिस की वजह से ये अकाउंट एनपीए था, उसकी इरेगुलरिटी उसने दूर कर दी, तो क्या सारे की सारी फैसिलिटीज रेगुलराइज हो जाएंगी, अपग्रेड हो जाएंगी? उसने कहा नहीं, ये नहीं होगा. अगर बाकियों में सपोज कीजिए 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का भी ड्यू है, जब तक वो सब फैसिलिटीज में जो कुछ भी ओवर ड्यू है क्लियर नहीं करेगा, चाहे उसकी वजह से अकाउंट एनपीए नहीं हुआ था, वो जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक वो अकाउंट एनपीए से परफॉर्मिंग में नहीं आ सकता. आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सो फार एज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न. एक जो और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, एंड आई थिंक दिस इज ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेट मी आल्सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि इसमें भी बैंक के सिस्टम्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा. उन्होंने ये कह दिया है कि भाई किसी अकाउंट को आपने रिस्ट्रक्चर किया, आपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कर दिया, और अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करके जो क्लासिफिकेशन आपने देनी थी दे दी, अब आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो,
अब उसमें 3 टर्म्स वो लेके आए अलग अलग। बेसिकली एक तो अब वो बात कर रहे हैं मॉनिटरिंग पीरियड की। मॉनिटरिंग पीरियड को उन्होंने एक तरीके से डिफाइन किया है, स्पेसिफाइड पीरियड को किसी और तरीके से डिफाइन किया है। परंतु जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप किसी भी अकाउंट को 1 साल से पहले तो अपग्रेड कर ही नहीं सकते अगर आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया तो। लेट्स बी वेरी क्लियर, जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है 1 साल से पहले आप उसको किसी भी सूरत में अपग्रेड नहीं कर सकते। अब आप ये कहेंगे कि साहब अगर 1 साल में उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। यहीं पे कैच है सबसे बड़ा। वो कैच ये है, ये अभी तक नहीं था। अभी तक ये था कि आप साल के आखिर में देखते थे भी इसमें पूरे साल में जो क्लियर करना था वो कर दिया है तो ठीक है, अकाउंट को अपग्रेड कर दीजिए। अब उन्होंने क्या कह दिया? अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर साल में किसी भी दिन की बात कर रहा हूं, उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया है, सपोज कीजिए उसने सितंबर का इंटरेस्ट था वो टाइम पे नहीं दिया, तो फिर वो फेल हो गया वो पीरियड, वो 1 साल का पीरियड में नहीं काउंट हो रहा। अब वो साल के पूरे साल की इरेगुलरिटी की क्लियरिंग की बात नहीं है, आप किसी भी दिन में डिफॉल्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अगर आपकी कोई एलसी डिवॉल्व हो गई इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर तो हो गया आपका तो काम, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग धरी की धरी है, उस रिस्ट्रक्चरिंग का कोई फायदा ही नहीं है बेसिकली इफ यू आस्क मी। So I think these are all very dangerous trends and these are very dangerous points which the auditors will have to be very carefully looking at. Monitoring period का उन्होंने concept दे दिया। Monitoring period में उन्होंने कह दिया कि भाई अगर 10% अगर आपने जितनी पेमेंट लेनी है उसका 10% ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज अगर वो आ जाएगा तो मॉनिटरिंग पीरियड की बात है। अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड में जाना जहां पे वर्ड स्पेसिफाइड पीरियड है तो फिर वो 20% ऑफ द प्रिंसिपल प्लस कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट की बात करना। तो ये टर्म्स हमें सीखनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी और ये समझ के और सोच के फिर इसके आगे का ऑडिट करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता पहले भी कैश क्रेडिट की होती थी और अब भी कैश क्रेडिट की है, क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग में 90 दिन से ओवरड्यू है तो ठीक है कर देंगे, एनपीए कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। टर्म लोन में 90 दिन से ऊपर ओवरड्यू होगा कर देंगे, परंतु पहले इंटरेस्ट डेबिटेड की बात वो करता था फ्रॉम द एंड ऑफ, कि आपको वो कैलकुलेट करना था फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर टू डिटरमिन द ड्यू। अब वो कहता है कि जिस दिन इंटरेस्ट डेबिट हुआ उसी दिन से आपको काउंट करना, ठीक है ये भी कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। पर कैश क्रेडिट के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे डे बेसिस, डेली बेसिस के ऊपर आपको 3 चीजें देखनी, आपको तीनों चीजें देखनी। आपको ये भी देखना कि किसी एक डेट में जाके ऐसा ना हो गया हो कि एक्सेस ऑफ डेबिट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द क्रेडिट्स। आपको ये भी देखना है कि आपकी डीपी हैज नॉट बीन एक्सीडेड ऑन एनी पर्टिकुलर डे, और कहीं पे सैंक्शन लिमिट तो ओवरड्रॉन नहीं है। अगर वो आपके 3 महीने एंड ऑफ द क्वार्टर की बात ही नहीं, आप इट इज फ्रॉम डे टू डे बेसिस बेसिकली। अगर फिर 90 दिन आपके पूरे हो जाते हैं then the account will be considered to be NPA। तो ये सब चीजें नए तौर पे अभी आई हैं। उसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर काफी सारे प्रपोजल्स हैं जो डेफिनेटली अजय जी डील करेंगे। मैं जो आज तक बोलता रहा हूं उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं आज जो बोलूं, जो चेंजेस रिसेंट आई हैं इनमें मोटी मोटी वो सारी की सारी आपके साथ बात कर लूं, और वो मेरे ख्याल में अजय जी मैंने मोटा मोटा कवर कर लिया है सारी की सारी चेंजेस का। रेस्ट नाउ यू, फील्ड इज योर्स बेसिकली, एंड आई थिंक आई जस्ट टुक अबाउट 40 मिनट्स टू कवर इट अप। जो मैंने अपने आप को 45 मिनट का पीरियड दिया हुआ था, आई हैव बीन एबल टू कवर इट इन 40 मिनट्स मोर और लेस। थैंक यू सर। और संख्या भी आप देख रहे हैं 302 303 है, और सर आपकी बैड हेल्थ होने के बावजूद भी 303 मत करना,
301 हो गया 303 नहीं सर, करना, 301 हो गया 303 मत करना, बाकी ठीक है। सर इट इज ऑल ड्यू टू यू सर, कि मेंबर्स आए, मेंबर्स आपको लव करते हैं और ड्यू टू यू ही आपके आए हैं। नहीं, ये तो आपको प्यार करते तब आए हुए हैं, आपको नहीं बता नहीं नहीं दिया सर मैंने। सर ये आप ही की वजह से है। और मैं तो अगेन थैंकफुल कि आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने ये मेंबर्स को टाइम दिया, मोर देन 45 मिनट मैं व्हाट एवर अश्विनी यू कटवालिया कमिटेड जी सर। को भी देख पा रहा हूँ, अब दो दो हाँ अश्विनी आपस में बगल में बैठे, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही सर now thank you once again sir, thank नमस्कार you. सर। Now it is time to our another speaker, CA Ajay Jain ji. Ajay Jain ji is 1986 pass out and having a lot of experience in bank audit, and some of his audit report on banks was discussed and appreciated at very higher level also. So this is the brief profile of our Ajay Jain ji. With this, I मैं welcome you once मैं again. एक ही बात कहना चाहूंगा राजेश जी, भीष्म पितामह का टाइटल इनका है, Sir, मेरा sir, नहीं। sir. मैं तो हर लेक्चर में 40-45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा बोल के चले जाता हूँ, ये 3 घंटे बोलते हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू अजय जैन जी सर। सर स्क्रीन शेयर करो सर। विजिबल? यस सर, यस सर। My guru in the banking, Amarjit Chopraji, Central Council member in absentia. I think he is not there at the moment. Sneev Singhal ji, convener the group, Rajesh ji, and well-known personality which I am saying, Ashwani Jindal ji, Ashwani Katwalia ji, and Lokesh ji, and my friends. I am thankful to the study circle for giving me this invitation. चोपड़ा साहब ने किस बात बोलने का मतलब ये है कि स्पीकर को सोचना पड़ता है क्या छूटा है या नहीं छूटा है। सब कुछ तो कवर कर दिया, अब उसी को घुमाना है, अब उसके अंदर नई चीज कहां से डालनी है वो एक बड़ा सोचने का मुद्दा है। But what Chopra sir had said, there are a lot of issues which is very difficult for auditor as well as banker, but we have to find out the solution now, how to handle this situation. Now I am linking all these amendments with the long form audit report. Now the LFR circular which was issued last year by Reserve Bank of India, now it is complete in all respect if I link all these amendments with that. And I will touch upon all these circulars in between. चोपड़ा साहब ने सबसे पहली बात ये कही, इसका क्या सोल्यूशन रहेगा वो बताना है। वो बता दूं, सीधी सी बात ये है, we all must know what we need first of all. That I used to say in this long form audit report, in this all this circular, we must understand what we need. And RBI has already issued a circular for automation, and we must know what we need. And the very first day we should issue a letter to the bank that these audit trails we need from you. Give reminder second day, give reminder third day. Either they will provide us or they will keep mum. Then at the end of the day we can say we has asked for this information but you have not provided, and then this will become the base for the disclaimer what Chopra sir has said. So first we should ask. If we will not ask and then we are going to give the disclaimer, that is our fault. But we must know what we need and we should ask from them. So some important points which Chopra sir has discussed in brief, I am touching it upon the detail on the screen now. In the 12th November circular, what it says about this? There is an amendment with regard to the repayment, not specifically mentioned, what Chopra sir has said. Now this time it is to be mentioned. And some of the banks has got the printed format for that. And they are getting it signed from the borrower in the new loans, whether we have informed you or not. Because in this circular, there is one line also they have mentioned whether the borrower shall be appraised. Borrower shall be appraised for the same. That is the language they have used.
Now for that, banks have taken the printed format and they are taking whether confirmation from the borrower that they have been appraised or not. They should provide the repayment schedule. Bifurcation of EMIs between principal and interest, even that has to be given. So these all the changes this time it has been done. So it will be helpful for us. I believe so. In case of the moratorium, exact date of commencement of the repayment that has also to be given. In all these clauses issued in this circular November 12, except 3 clauses, all are effective from November 12 itself. There are 3 clauses where the different dates of application has been given. First clause is this: these instructions shall be complied with at the earliest, but not later than December 31st for fresh loans. And for existing loans, at the time of the renewal and review, that has to be updated. Next amendment. What is that? That is very important. Now we were discussing. What was the earlier language? They have deleted that and issued the new language. Earlier language in the for declaring the stress asset, what was that? Potential framework for resolution of stress assets required the lender to recognize incipient stress in the borrower accounts immediately on default. Earlier, the word was on default. Now the word is not on default. The word is on due date. And due date is called calendar date, and that is the relevant date. And on the relevant date, day and process is to be done by the bank. Now, this is the exact language they have used. What is it said? In order to remove ambiguity, it is clarified intervals are intended to be continuous. In case of the term loan, the due date becomes, and they have given example for that here also. First, let us discuss the term loan. What example they have given? Let us see that example first. In example in the circular they have given, if due date of the loan is March 31st, 2021 and full dues are not received before the lending institution runs the day and process for this date. Suppose installment is due on March 21st, 2021. So at the end of the March 31st and the end of the day, the run will be taken out. Now we will find out whether money is received or not. If not received, it will be treated as overdue on 31st March 21 itself. Now, so it means as and when installment is due, as and when interest is applied, every bank has to do the day and run processes and then to fix up what is the SMA situation on that. In this example, what is said? If continuously remains overdue, then account will be get tagged SMA 1. It was overdue on March 31st, 21. Up to 30 days, it will be SMA 0. But after completing 30 days, means 30 plus first day, that will become April 30th. That will become SMA 1. Same way, another 30 days, 61 days, 60 days, SMA 2, and after that, it will become SMA 2. So example is given, they have given what will be the date of NPA also. So this example is very important they have given, and that is what it says. We have to generate day and process report on the relevant date. अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो what I can conclude on this? For declaring account overdue, day and process has to be taken for the due date of payment. Date on which report is generated, it is not material. Suppose bank is generating report after 1 month of the due date, that is immaterial. I want on the date of the due date whether account was overdue. That is the starting point. Date on which report is generated, it is not important. They have told both the things, not only SMA, NPA classification also be on the continuous basis. Because one, we will decide SMA classification, then immediately we will decide NPA classification also. If in between account is become NPA, so what will be the impact of this continuity aspect? What is the impact of this continuous word? If during the in between the year, once the account is declared NPA, it can be upgraded only when all the irregularities in all the accounts have been regularized. For declaring NPA, 90 days is required. But for regularization, all regularization is in all accounts
all overdues has to be regularized. That is the impact of this continuity. So it is clarified, it has to be done by banks, and we have to ask for the audit trails from the banks about this. So this is what it has come. Next, this it means for the what will be the position as on 31st March 2022. Up to the last year, there was a confusion. If account is overdue as on 31st of March, whether account will be NPA in the leap year or non-leap year. Now they have resolved all these issues. The date on which amount is due, installment or interest is due for payment. If it is not received, that will be the first day of overdue. It means as on 31st of March, in case of the term loans, if any amount which is pending for recovery since 31st of December, account will become NPA. So this is what it has come this year. This is the continuous. Now you see, it means bank has to run day-end process. For example, each due date in EMI cases, each due date for principal plus interest cases, each due date for SMA1 when it is becoming SMA2. So all due dates. It means bank has to do some updation, or they should generate the audit trial for that. Then only auditors will be able to verify. Only exception they have given for that. Exception for SMA classification. Agriculture advances will be governed by crop season concept. That is the only exception for this. One more para in October 1st, 2021. Now they have linked that circular with this automation. Because last year, one circular was issued on September 14, 2020, where it was said bank has to set a system of automatic generation of the NPA classification and the SMA classification. If without manual intervention, because now I am linking it to the long form audit report. In LFR, there is a detail is asked whether anything has been done in computing NPA account, the manual intervention is there. So that all logs have to be, audit trail has to be kept by the bank, and we should ask that report from that. So there's a big thing bank has to do, and we should ask for the audit trail. Now one more issue which Chopraji had discussed, that is effective from November 12 for the CCOD continuous basis. That is already discussed by him in detail. Now point is this, every day bank has to see which account is continuously overdue more than 90 days. Every day bank has to see it is continuous. This is not the quarter. Any 90 days it can happen. In which account, in the continuously in a 90 days, the interest credits are not sufficient to cover the credit submissions are not sufficient to cover the interest debited in that account. So that all these things bank has to do. Word balance sheet has been deleted. It is effective from November 12, 2021. So every day processing bank has to do. Now with regard to the interest payment, earlier language was what for the interest payment I'm telling. In case of the interest payments, banks should classify an account for interest. It was the guidelines. Banks were started because the computerization has come. Banks were applying interest on monthly basis. System was applying on monthly basis. The question arises whether the account will become due to the monthly debit of the interest. So in circular, it was mentioned, master circular. In case of the interest payment, bank should classify an account as NPA only if the interest due and charge during the quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter. It means October, November, December, total 3-month interest. For that, we were getting another 90 days to declare NPA for that basis. Now this is gone. Now they have changed the word. In case of the interest payment respect to the term loan, an account will be classified as NPA if the interest applied at specified rest. Word is applied, not due, applied at a specified rest. If they are debiting monthly, remains overdue more than 90 days. So I told there are 3 clauses where the application date is a different. Otherwise, all are effective from November 12. This is that clause. That clause is effective from March 31st, 22. But what will be the impact of this? For only it will be applicable for January, February, or March. So January, February, March, if interest is not paid, account cannot become NPA on that basis.
But December interest quarter, that is applicable, old clause is applicable for December. But because last date when it becomes due for the payment is the overdue date, it means if any interest is pending this year for the payment, even for the month of the December, as on the 31st of March, account will be classified NPA. So far as March quarter, that impact will come in the next year for that. Next comes upgradation. What is the guidelines of the upgradation earlier? Actually, basically, I should say RBI has clarified it. Earlier also there was the same language. Earlier, what was the language of the for upgradation? Account can be upgraded if all the areas have been regularized from the genuine source. This was the language, all the areas. Somebody might have misinterpreted that. That is why RBI has clarified to avoid ambiguity that loan should be classified NPA, may be upgraded standard asset if entire areas of interest and principal are paid by borrower. And by 15th February circular, they have again clarified interest and principal are paid areas in all the accounts. So this is, if I add that circular, 15th February circular, and this, now it concludes ultimately the same meaning which were earlier, but it is further clarified. Account can be upgraded if all the irregularities in all the accounts have been regularized. Exception is with regard to upgradation of account, classification or NPA due to restructuring and non-achievement at DCCO, it will be guided by that guidelines only. Next comes clause number 11 and 12 of this circular. It is clarified moratorium period on the payment of interest permitted at the sanction. Now, what Chopra sir has said, absolutely right. That is mentioned over here. During the moratorium period, if interest debited, there is a condition of the moratorium period for interest payment. It will be capitalized, and when account becomes NPA, it need not to be reversed. But there is a condition for that. In bracket, they have mentioned permitted at the time of sanction of loan only. It means when the sanction was done, moratorium was given, that it is okay. It is not possible subsequently somebody has given the moratorium because due to some financial difficulty, that will not be there. It is only at the word is written within bracket, permitted at the time of sanction of the loan. But for the DCCO cases and gold loan cases, that will be taken separately as per the different guidelines given by the circulars. Now, this is 15th February. These are only the clarification. Someone might be misinterpreting out of order definition is applicable only to the cash credit loan. They have clarified it is applicable to the overdraft facility also, including those not meant for business purpose. This way, individual OD is taking, same guidelines will be applicable, which is applicable to the cash credit also. And they are further clarified business purpose and or which entails interest repayment as the only credit. There are sometimes the loans is taken, the drop line cases are there, where sometimes it happens. There might be the condition you pay only the interest, OD will remain as it is. They have clarified that will also be covered in that. So this is what the RBI said in this 2 circular. We should be very, very careful. Now I will link all these when I will discuss the long form audit report. So these are the guidelines of this. Now I am taking you some important aspect of the restructuring for this year at the branch level. We should take care of it. First of all, let me touch it upon what Chopra sir had said. Then I will take some points of the MSME circular and some point of the COVID-19. Where again, one new circular has been issued by, 2 circulars have been issued by Reserve Bank of India this year for MSME and 2 circular for COVID-19 and 1st October circular for other restructuring. Now let us see what are the restructuring issues at present. Agriculture restructuring, that is covered by the natural calamities circular. So MSME, let me take first as MSME. So Rajesh ji, yesterday on my Facebook, I have updated the complete list of the circular, which will be helpful to us in the audit, which I am showing on that screen. That list is there. I will send you the separate list. You can put it in your group and send to the members so that they can download from rbi.org.in.
Okay, so I have given the complete list of all the circular which were issued in the last year also for the MSME. The reason being, each circular is interlinked in the chain. So what are the latest guidelines as of now? Let me discuss what are the amendments have come in MSME. That is only I am discussing at present. Now this is changed in 21-22 MSME circular. Up to the last year, what was the guidelines? MSME certificate which were issued up to the June 30th, 2020 were valid up to March 31st, 2021 only. Now RBI has extended. If somebody was having the certificate issued up to June 30th, 2020, that will be valid. The date is extended up to March 31st, 2022. So before that, they should apply a new certificate. But June 30th, 2020, old certificate which were issued, they are valid up to March 31st, 2022. Next issue. This is the amendment is there in MSME definition. 3 activities were covered in MSME. Wholesale and retail trade and repair of the motor vehicle and motorcycle. Wholesale trade except motor vehicles. Retail trade except motor vehicle. Ultimately, trade and retail activities, these are covered under the MSME this year only. So circulars list I will provide you. One-time restructuring. Last year, up to last year, RBI issued lot of circular on this. This year again, this scheme has been extended because there was some period of COVID, and that new circular RBI has issued. Okay, this scheme is further extended, but the terms and condition differs which were issued last time circular. So I am discussing this. What are the difference in that? Borrower should be MSME as on March 31st, 2021. First condition. Up to the last year, this scheme was applicable only to the borrower having the total funding from the financial institution, banks and NBFCs up to 25 crores. Now in this scheme, it is now 50 crores. So all the MSMEs having total funding, banks for NBFC, 50 crore rupees as on 31st of March 2021 will give benefit of one-time restructuring in this scheme. Number one. Next, account should be standard as on March 31st, 2021. Third, it should be the GST registered at the time of implementation. And fourth, that if as per law, it is supposed to that they are not supposed to take GST certificate, they should show the evidence for that as on 31st March 2021. Asset classification of the borrower classified as standard may be retained as such if where accounts slip into the NPA. Suppose it was standard as on 31st of March 2021, because this benefit is being given this year, and accounts slip into the NPA category between April 1, 2021 till the implementation of the restructuring package given in that. Account will be upgraded and will be treated as a standard. Asset classification benefit will be available only if restructuring is done as per this circular. If not as per this circular, go as per the normal restructuring norm as per the circular October 1, 2021. Next condition. What are the guidelines? Up to the last year, if you see the circular, what was the guidelines for this? Restructuring is the borrower account is to be implemented before 31st of March. In the last year, that was a simple this language. This year, in the new guideline, they have changed it. What is that? They have used the word invocation. What is the meaning of invocation? Let me tell you. Invocation means borrower has given an application to the banker. I need one-time restructuring as per the RBI guidelines. Bank has to agree with that application. After agreement, bank has to intimate to the customer, okay, we agree, we are giving you the one-time restructuring benefit. That date on which they have intimated, they have decided, that will be called date of invocation. After getting application within 30 days, bank has to give reply to the customer. They have accepted the term, they agree to give one-time restructuring. So that will be called date of invocation. So account, this request has to be invoked within 30 days, before 30th September. So account should be standard on March 21, 31st March 21, and the period is kept 6 months for invocation.
during this 6 months, yani up to 30th September 2021, customer has to give application during that period, and within 30 days, bank has to invoke. As and when bank has given the invocation letter, it is called date of invocation. But that date of invocation should be up to 30th September 2021, not after that. Number one. After that, 90 days more is given. That is the invocation means agreement only. But it will take some more time to implement the terms and condition of the restructuring package. 90 days more is given. Now, after invocation, within 90 days, scheme has to be implemented. So these are this time guidelines. Earlier guidelines was only word implemented. Restructuring we said implemented when all documents have been entered to and everything has been updated in the system. It is clarified. Now, this is I think 1, 2, 3. This is the 4th extension. If anybody has taken the benefit of one-time restructuring earlier scheme, that will not be applicable. That person will not get in that scheme. So these are the guidelines of this scheme. And say last time, up to the last year in this scheme, the additional the provision was 5%. Now this year, if in the new scheme, account has been MSME restructuring one time has been done, there will be the provision of 10%, not 5%. This is a one-time exception. Account will remain standard. If again the restructuring has been done, now it will be covered as the restructuring norm and account will be classified as substandard. So these are the guidelines with regard to MSME. And now the point is coming, one more guidelines RBI has issued this time. One is it is MSME one-time restructuring up to 50 crore rupees. What is about others? For others will also get the benefit. RBI issued one more circular for others also. In others, I will not touch it upon the last year's circular. It will take a lot of time. But what are the guidelines this time they have issued for new scheme, COVID scheme? Last year the scheme was open to everyone other than MSME. This scheme, second circular. This time they have restricted it without change in ownership and the personal loans. Lending institute should ensure that it is given only for the COVID-19. COVID-19 के अलावा और किसी को ये scheme में नहीं मिलेगा. It should be affected by the COVID-19 only. What is this scheme? To whom it will be applicable? To whom it will not be applicable? MSME loans up to 50 crores. This will be covered by the MSME one-time restructuring. So this will not be, they will not be eligible for this scheme. Number one, farm credit, they will not be applicable for this. Third, financial services, they will not be applicable. And in the circular, some other categories are also given. These are the broad main thing. Now, this scheme is divided in two parts. Last time, these are the alag segmentation was done. But this time, what they have done? Resolution of advances to individuals and small business. That's all. First part is for all. And second part is for who has already taken the benefit in the earlier scheme. That is for the already taken. So these are the some guidelines have been given for this. First discuss what is the brief about individual and small business this time they have given. Individual personal loans, they will get benefit in that. For personal loans, individual. And definition of the personal loan is given in the circular harmonization of the banking statistics that you can download. In that, there is clearly mentioned what is the definition of the personal loan. They will get benefit in that. Next is, this is a detailed is given. Next category, who will get benefit in that? Individuals who have availed the loans and advances for business purpose. First condition was individual personal. और personal वाले में कोई limit नहीं दी हुई. And in the second category, individuals who has availed the loan for business purpose and to whom the lending institutions have aggregate exposure not more than 50 crores as on 31st March 2021. In the last year, there was no limit. This year, they have restricted the benefit in this scheme up to 50 crore exposure only to individual for small business. Now, small business, other than individuals, including those engaged in retail trade, wholesale, other than classified in MSME,
and to whom lending institution have 50 crore exposure. So first is individual personal, second is individuals for small business purpose, third is small business who are engaged in retail and trade other than MSME as on 31st of March 2001, exposure is 50 crores. So these are the three categories to them which is applicable. Point is this circular was issued earlier. In that they have mentioned other than retail trade. Now that circular is amended. Now retail and trade are covered and they can get benefit in that circular also. So these are the condition. Other condition, what was that? Borrower should not have availed in last year or any benefit in the earlier scheme. Last year RBI issued the circular for the stress resolution. Nobody should have taken the benefit in that. This is number one. Second thing, provided further credit inspection exposure to the broker is standard. Now this thing. In the last year circular, what was that? It was language was account was standard but not overdue more than 30 days. Not in default more than 30 days in the last scheme. This year there is a relaxation. It said only standard. It will be standard. If not overdue more than 90 days, account cannot be NPA. It will be standard. So there is a change with the last year and this year. This is a relaxation in that. Next discuss in the cases of loan where resolution had been implemented, resolution 1, and where resolution was permitted, moratorium. Now here is the benefit is given this time. Now I am told anybody has taken any restructuring in the earlier circular, they will not get benefit in the circular. There is one exception only. Because in this resolution plan, Reserve Bank have asked the banks to give the moratorium of 2 years. Suppose somebody has taken the moratorium in earlier scheme for 1 year. RBI said, okay, no problem. In this scheme, you can extend the moratorium up to 2 years. That's all. No other change. So that is the exception of rule that if somebody has taken the benefit earlier, they will not get benefit this year. So that is extended so that everybody can be the equal footing and they should get a benefit of the 2 years. The guidelines for 21-22 restructuring account should be invoked. Same. Invocation should be 30 days up to 30th September. Within 30 days of the receipt of the application, that bank has to revise and invoke it, and within 90 days it has to be implemented. Resolution plan, related documentation, so all these are the general resolution plan, what benefit can be given. Asset verification, account will remain standard. If additional finance is given, it will remain standard. However, it is not implemented, that it will become NPA and additional finance will go in the same category. Provisions is a 10% IRAC norm immediately before implementation or 10%. So these are the some benefits this time Reserve Bank of India given. One more thing RBI has given for all the cash credit accounts which were where the resolution plan has been accepted last year. RBI said you can do one thing, one-time measure. You should recalculate their margin, their requirement due to the again the COVID, because second time has come. Give some relaxation to them, give some more margin to them, or DP benefit should be given. But everything should be regularized before 31st of March. So these are the guidelines with regard to restructuring of MSME and all these things. And third, which Chopra sir had discussed, let me touch upon before taking to long form audit report. What are these guidelines now? Because earlier, if you see in the master circular, there was a huge circular with regard to the restructuring. Because every time addendum is coming, new circular is coming, there are a lot of lists. Everything has been merged and very simple and straight guideline, but little complicated. You have to understand it. What it said, restructuring. What is restructuring? Let me recall it. Any benefit given to anyone which would not have been given to the public at a journal. If any concession is given to a person who is in financial difficulty, then it is a restructuring. So if what will happen if it is a restructuring? And in the circular there is some time RBI has given some items which can be treated as a financial difficulty, but it is not an exhaustive list. On the basis of that, bank has to claim its policy and decide what will be treated as a default. It is a financial difficulty. If account is restructured,
and it is standard, it will be classified as substandard. If it is already NPA, then certainly it will continue as it is. So in the both the condition, it will account will be the NPA. Now upgradation. For upgradation in this restructuring, they have made two parts. One is for MSME accounts where aggregate exposure of the lender is less than 25 crores. It is already restructured, restructuring is there. It can be upgraded when it has shown satisfactory performance during specified period. They have bifurcated loans in two parts, MSME up to 25, less than 25 crores and all other loans. So for both these categories, the definition of satisfactory performance and specified period is different. First, let us understand for MSME, where exposure is less than 25 crores, what is the definition of satisfactory performance? Satisfactory performance means no payment, interest or principal shall remain overdue more than 30 days at any time during the specified period. What is the specified period? They have defined specified period means 1 year. तो एक साल तो मिनिमम होगा ही होगा. 1 year from which date? जब रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया, बैंक माइट हैव डिसाइडेड आप इस तारीख को प्रिंसिपल देंगे, इस तारीख को इंटरेस्ट देंगे. विच एवर इज लेटर, फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, विच एवर इज लेटर. अगर प्रिंसिपल की कंडीशन पहले लगा दी, इंटरेस्ट की बाद में लगी, तो इंटरेस्ट उठा लो. So whichever is later from that 1 year, so under any circumstances it will be more than 1 year. So this is called specified period for MSME below 25 crore. Now if it's shown satisfactory performance during the specified period, now we have to see specified period में satisfactory performance दिखाई है नहीं दी. Specified performance उस पीरियड में कभी भी 30 दिन से ज्यादा अकाउंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए. अगर हो गया तो भी रिस्ट्रक्चरिंग रखी रह जाएगी. Account will be downgraded or NPA होना ही होना है. So sorry, NPA तो already है, it cannot be upgraded and further downgradation will be there. So this is for the loans MSME less than 25 crores. अब आ जाइए अदर लोन्स के लिए जो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे. Let us come to that. अदर्स लोन के लिए मॉनिटरिंग पीरियड डिसाइड किया. मॉनिटरिंग पीरियड के बेस पे सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगी. मॉनिटरिंग पीरियड क्या कहा? Period from the date of implementation of the resolution plan. Bank has given restructuring package and restructuring package को implement किया. उस डेट के implement करने के बाद जितना आउटस्टैंडिंग था बैलेंस एक्सपोजर, उसका 10% जिस दिन पे हो गया, from start of resolution plan till the repayment of 10%, that will be called monitoring period. Account can be upgraded during the moratorium period if it is on satisfactory performance. यहाँ पे satisfactory performance का मीनिंग दूसरा है और वहां पर दूसरा है. MSME में 30 दिन तो दे दिए, यहाँ पर एक भी दिन नहीं दिया. अगर एक दिन भी ओवरड्यू हो गया इस मॉनिटरिंग पीरियड में अकाउंट, तो भैया अपग्रेड नहीं हो सकता. फिर तो आगे चलते जाओ, वो डिग्रेड ही होगा. Satisfactory performance means borrower entity is not in default at any point of time during the period concerned, means monitoring period. So this is what we have to understand here. अब एक कंडीशन और लगा दी भाई. एक पार्टी ने क्या करा, आज रेजोल्यूशन प्लान सैंक्शन हुआ और 2 महीने में 10% पे कर दिया. तो हम क्या कहेंगे, साहब 2 महीने में मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर कोई भी ओवरड्यू नहीं था, 2 महीने के बाद इसे अपग्रेड कर दो. आरबीआई ने यहाँ कैप लगा दिया. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. There is a cap for this. And what is the cap for this? Condition is this: account cannot be upgraded before 1 year from the date of the commencement of first payment of principal or interest, whichever is later. जो कंडीशन MSME में लगाई है वो कंडीशन अल्टरनेटिवली लगा दी. या तो 10% मॉनिटरिंग पीरियड में पे किया, अगर वो जल्दी पे कर दिया तो भैया इससे पहले नहीं हो सकता, और अगर ये निकल गया तो वहां से नहीं हो सकता. तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगा दी. इन्होंने ये लगाया और इसको थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. और दूसरी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रिंजेंट है. एक दिन भी ओवरड्यू हो गया
तो भैया तुम अपग्रेड तो हो नहीं सकते। और अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी पीरियड में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ने दिखाई, डिफॉल्ट दिखा दिया तो क्या होगा, तो भाई पार्टी कहां जाएगी, बैंक कहेगा यार ये डिफॉल्ट हो गया, इसका दूसरा रेजोल्यूशन प्लान तैयार करो। अच्छा दूसरे प्लान हो गया, डिफॉल्ट डिक्लेयर किया, 30 दिन का पीरियड डिफॉल्ट डिक्लेयर करने से उसको कहते हैं रिव्यू पीरियड। रिव्यू पीरियड के 30 दिन के खत्म होते ही 15% का एडिशनल प्रोविजन होना है। तो नॉर्मल प्रोविजन तो हो गया रिस्ट्रक्चरिंग एनपीए का, वो तो चल ही रहा है, और साथ में अगर उसने फर्दर डिफॉल्ट कर दिया तो 15% का एडिशनल प्रोविजन होगा। और साथ में बड़े लोन्स, मेरा ख्याल ये ब्रांचेस सब सेंट्रल ऑडिटर के पास ही होंगी, 100 करोड़ से ऊपर वाले लोन्स में एडिशनल कंडीशन लगा दी कि भाई साहब आप सीआरए एजेंसी की रेटिंग कोड लेके आओ इन्वेस्टमेंट ग्रेड की, तो ये अपग्रेड होगा, वरना नहीं होगा। और 100 से एक कंडीशन लगा दी 100 से 500 की, और एक लगा दी 500 करोड़ से ऊपर की, उसमें 2 रेटिंग ले आओ। तो भैया ये सारी, इससे आगे मैं रिस्ट्रक्चरिंग में इसलिए नहीं जाऊंगा, वो बहुत हाई लेवल का सेंट्रल ऑडिट का आ जाएगा। सो दीज आर द ब्रीफ व्हिच आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू, बट वी हैव टू रीड इट एंड स्टडी इट बिफोर गोइंग टू द ऑडिट। एटलीस्ट दिस इंपॉर्टेंट सर्कुलर, एमएसएमई के 2 सर्कुलर इस साल के आए हैं, कोविड-19 के 2 सर्कुलर इस साल आए हैं, एनपीए के 3 सर्कुलर इस साल आए हैं। ये सारे सर्कुलर्स एक बाइबल है इस बार ऑडिट के लिए, वी हैव टू रीड एंड डू दैट। नाउ राजेश जी, हाउ मच टाइम वी हैव? सर वैसे तो 7 बजे का टाइम है, तो अभी आधा घंटा है हमारे पास, हाफ एन आवर तो है ही है। लोकेश जी बोलना चाहेंगे क्या? लोकेश जी भी आए हुए नहीं? लोकेश जी तो आपको सुनने आए हैं सर आज। क्या बात है भैया, मेरा टेस्ट लेने आए आज लोकेश जी हैं। सर अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एलएफआर के इंपॉर्टेंट थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, और जो जी नए सर। सर्कुलर आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट एलएफआर पे आ रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, प्लीज। There might be some new members, they can understand how important the long form audit report for us, and whatever the new circular has come, I think these are very related to the long form audit report. और मैं ये समझता हूँ, अगर हम मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आया गए, अगर हम एलएफआर को बहुत तरीके से कर लें तो जितना भी हमारा ऑडिट है प्रोग्राम है, इट इज अ कंप्लीट ऑडिट प्रोग्राम, और मेरे का कुछ बचेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर एनपीए नॉर्म्स ऑफ दिस। And again, I am insisting audit trails. So I will discuss here some important audit trails for this year, what we have to take. देखिए बैंक्स के लिए भी इतना आसान तो है नहीं, we need time, we have to spend time for the audit, we should know what the audit trails we need. पहले दिन उनकी एक हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी सर्कुलर्स को पढ़ के और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के कि हमें क्या डाटा बैंक से लेना है। बैंक हैज सपोर्टेड, RBI has supported us by the circular September 2020. That bank has to do the automation, they have to do, they have given time for. Even last year when I visited to the bank audit, I asked a huge list, I have given 30 or 40 items to the bank, please provide these audit trails. Touch wood, I am telling you, SBI has provided all the audit trails to me. All the audit trails. I was not expecting, but very good. They're tremendous. But again, I am requesting you, we must know what we need. That is the most important thing. And if they are not giving, then certainly we are having a full right to disclaim the report and give a proper disclaimer of this. So let us come to this. Cash. ATM is added. और हम क्या सोचते हैं, एटीएम तो कुछ है नहीं, ब्रांच में एक एटीएम लगा हुआ है, हमने कैश चेक कर लिया, रिपोर्ट दे दी। पर एक बार मेरे को करेंसी चेस्ट ब्रांच मिल गई, पूरे शहर के 130 एटीएम which were connected to the currency chest branch, and they are having a separate department for controlling things. They have appointed some agency PN writer, they are giving cash to them and they are feeding cash in that their ATMs. But the office, currency chest office, their separate department are monitoring that. Now what I verified there, I am telling you, if anybody get that branch, how to handle this situation, because there are chances of frauds. After 2 months of completion of audit,
I came to know that there was a fraud found in that branch in one of the ATMs. Then I raised my ears. I have verified everything or not. I came to know when a physical verification was done at that time, there was some shortage and the big shortage was found in the ATM machine. So point is this, how as an auditor, what I have verified in that branch, that is what I am telling you. First of all, in all 130 ATMs, I asked from the bank to provide me the physical verification report done by the bank staff. So no doubt for 130 ATM in one day they cannot do. They are having a system of doing physical verification. At least all the ATM should be covered during the quarter. So I have taken all these reports. So in this report, what I have verified, now I am telling you. First of all, physical verification figure. Number two, there is a slip which has been taken at the time of physical verification from ATM machine. Copy of that slip. Number two. Number third, in their general ledger, they are having ATM machine wise account. What was the balance in the general ledger on the date of physical verification? That I have taken that report. All three should match. If there is a difference in that, we should give in our report, long form audit report, number one. Number two, whether they have done the physical verification or not, that is what we have to give. And third thing, when they are giving a cash to the replenishment agency, they might be having a separate account in their GL. Who has conducted the physical verification of the cash lying with replenishment agency? That balance should tally physically with their record plus the bank GL. So all these things we should see. If we are finding any loss of cash is there, we should report it here and then give MOC. This is very important point which I am sharing with all of you. Practically, I have done it, I have seen it. That is why I am sharing. We should verify. Next comes is that here, this is a very important point, where the branch maintains the account with Reserve Bank of India. This will be applicable basically in the big cities. What is that clause? Let us understand. Where the branch maintains an account with RBI. Because who is the owner of currency chest? Bank is not the owner of the currency chest. Reserve Bank of India is the owner of the currency chest. What RBI has done? Because my bank branch needs the cash. Every day we will not go to the Delhi Reserve Bank of India office or Bombay Reserve Bank of India office. Currency chest is, or the ownership is of the Reserve Bank of India. So currency chest branches, what they are doing, they are depositing cash in that or withdrawing cash on that. And they are intimating to the branch who is maintaining, which is maintaining the account with Reserve Bank of India. Whatever they have deposited in that, they will say it is being given to Reserve Bank of India. If they have withdrawn the cash, they will say it will give credit to the Reserve Bank of India. This is what the system is there. So anybody who is the auditor of the branch which is maintaining the account of Reserve Bank of India, that clause is applicable to that. What is the system? Currency chest branch deposit the cash, suppose 2 crore rupees on 31st of March in the currency chest room. So they will send advice to whom? To the link branch. The link branch, they will do the through inter branch. Link branch will do what they will do. They will give debit to Reserve Bank and credit to the currency chest branch. Entry is knocked off. But sometimes what happens? My currency chest branch has raised the advice on 31st of March, but link branch has not responded that entry on 31st March. They are passing this entry on 1st of April. That point comes to that. What is this point? Where the branch maintains an account with the Reserve Bank of India, the following additional information to be given. Entries originated prior to, but communicated, recorded after the year end. So these transactions to be reported. अब इस ब्रांच को ऑडिटर which is maintaining the account with Reserve Bank India कहां से पकड़ेंगे एंट्री? Now I am telling you. Take the inter branch reconciliation report, IBR. In that you will find कि currency chest branch ने एंट्री 31 तारीख को रेज करी पर वो unresponded रही 31 मार्च को. Now you can take the data and give MOC and report it here. So inter branch reconciliation is a very good report, and every bank is generating. Name may be differ, but we should take that report. अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा वो एक ऑडिट ट्रेल का काम करेगी जहां से हमारे और भी एरर्स हमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेशन लास्ट ईयर चेंज हो गई
कि हमें कौन कौन से रिपोर्ट करने हैं। अब ये 10% आउटस्टैंडिंग का, नॉन फंड एक्सपोजर का, एंड 10 करोड़ विच एवर इज लेस। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आरबीआई हमसे क्या मांगता है, जितने भी अकाउंट हमने वेरीफाई करे हैं उनकी सबकी डिटेल मांगता है, और वो इस फॉर्मेट में मांगता है। लास्ट ईयर सबने अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिए बैंक्स ने, और हमको सारा फीड करना पड़ा। करने के बाद निकाला आपने कितने परसेंट चेकिंग करी। बस मैं यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेंबर से, जो अकाउंट वेरीफाई किए वही यहाँ पे देना, क्योंकि आरबीआई ने पूरा सैंपल मांग लिया हमसे, हमने कौन कौन से एडवांसेस चेक करे और कौन कौन से छोड़े। कल को जिस अकाउंट को हमने चेक किया उसमें कोई फ्रॉड हो गया, एक बार तो चिट्ठी आएगी जरूर। हम कई बार क्या होते हैं, कैटेगरी 4 फर्म, कई बार हम लोग सोचते हैं यार हमारी फर्म छोटी है उसमें क्या आना है। एक बार मेरे पास एक लखनऊ से एक मेंबर का फोन आया, साहब मेरी तो छोटी सी ब्रांच थी, मेरे पास भी की चिट्ठी आ गई। मेरे भाई किस मैटर पे चिट्ठी आई? कहना है सर मैंने तो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया, पर पिछले ऑडिटर को डिक्लेयर करना चाहिए था, उसने डिक्लेयर नहीं किया, उसको चिट्ठी जानी चाहिए थी, मेरे को चिट्ठी आ गई। Then I asked, what was the issue? Sir, issue is this, I have declared the account as substandard. मैंने कि भाई डेट ऑफ एनपीए तो 2 साल पहले की थी, इट शुड हैव गॉन टू द डाउटफुल। आज ही इसी के ऊपर चिट्ठी आई है। मैंने कहा पीछे वालों को छोड़ दो, अपना देखो आप क्या छोड़ के आए। So this is what I am requesting you. This LFR report, it is a specific this time. तो लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया है, हर चीज की कंफर्मेशन हमसे मांगी गई है, एंड दैट वी हैव टू गिव। वी कैन नॉट से कि यस और नो ही मांगा है, उन्होंने कहा बताओ आप ये डिटेल दो, हम ये नहीं कह सकते। इन सम केसेस, इन फ्यू केसेस वी हैव नॉट कम अक्रॉस, नाउ दैट टाइम हैज एब्सोल्युटली गॉन। फर्दरमोर इसमें इंफॉर्मेशन क्या मांगी है, जो बड़े केसेस हैं, 10% of the outstanding fund based or non-fund or 10 crore whichever is less, in cases में transaction audit and account specific details, account specific details क्या है? अभी आगे LFR में सारी account specific details है। भाई स्टॉक स्टेटमेंट आई नहीं आई, बैलेंस शीट आई नहीं आई, इंटरेस्ट सही फीड किया नहीं किया टाइम टू टाइम, है जी, और आपकी स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट्स आई नहीं आई, ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन हुए नहीं हुए बैंक से, वो तो आपको उन लोन्स के अंदर हमको 100% देखना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। और एक आ गया वर्ड ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन अगर मैं लिटरली जाऊं डिक्शनरी मीनिंग, इट इज अ वेरी वाइडर मीनिंग। लेट अस कम टू दैट, एटलीस्ट वी शुड रिव्यू द अकाउंट, what are the transactions are happening there, what are rotation is there, so all these things this have to come. Let us come to the specific important issues. I am not taking all. Have you come across the quick mortality? ये हम पहले भी करते थे, जो सैंक्शन के 12 महीने के अंदर अकाउंट एनपीए हो गए उनकी लिस्ट मांग ली उन्होंने यहाँ पर। तो भैया वो तो बड़ा आसान है, हमारे पास लिस्ट आती है एनपीए की, हमें ये पता होता है कौन से डेट की सैंक्शन है, तो 12 महीने में एनपीए, उसकी डिटेल मांग ली उन्होंने। दूसरा, whether the borrower account applicable interest, मैं आपको बोल रहा था, it is a specific detail, whether the applicable rate is correctly fed into the system। अब हम क्या करते हैं, 31 मार्च को एडवांसेस की स्टेटमेंट दे दी विद इंटरेस्ट, साहब लिस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, सिस्टम में भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, अपना सैंक्शन लेटर उठाया, उससे सैंपल बेस में चेक कर लिए। पर मैंने आपको बोला अबव थ्रेशोल्ड लिमिट में तो 100% करना है। अब इसमें भी 2 मीनिंग निकलते हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च को है, वहीं पे नहीं छूटना, फ्लोटिंग रेट है, साल में 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो भैया बड़े केसेस में ये तो चेक करेंगे हम कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 बार कब चेंज हुआ, क्या सिस्टम में करेक्टली फीड तीनों बार हुआ है नहीं हुआ है। कुछ तो केसेस, बड़े केसेस में सब में कमेंट देना है, और लास्ट ईयर हमने, हमारे पास बड़े केसेस एक ब्रांच में कम थे, उसका चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है अकाउंट के अंदर जाओ, कस्टडी लेवल के अंदर इंटरेस्ट मॉडिफिकेशन स्क्रीन पे आ जाता है, किस तारीख से किस तारीख तक, अगर रेपो प्लस रिस्क प्रीमियम है, कितना रेपो था वो रेपो भर देता है, रिस्क प्रीमियम अपने आप उठा लेता है, जरा चेक कर लेना। और अगर बहुत ज्यादा है तो भैया करने पड़ेंगे, बड़े केसेस तो सारे करने पड़े थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव, क्योंकि उन्होंने बोल दिया स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर ऑल द अकाउंट्स अबव थ्रेशोल्ड लिमिट हैज टू बी वेरीफाइड, वी शुड कीप द रिकॉर्ड व्हाट वी हैव वेरीफाइड। इसके लिए भी आप एक तो चेक करने का ये तरीका है, दूसरा एक ऑडिट ट्रेल मांग सकते हो बैंक से, प्लीज प्रोवाइड द ऑडिट ट्रेल विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट मॉडिफिकेशन एट द डिफरेंट अकाउंट्स, और टाइम टू टाइम आपके पास सारे आ जाएंगे, जिसमें सैंक्शन बाद में हुई, उनको बेनिफिट दिया या रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ, एवरीथिंग वी विल गेट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिपोर्ट
in some of the banks. Next comes whether interest rate is reviewed periodically as per the guideline MCLR and EBLR. वो तो correct है, यहाँ पे दूसरा आ गया EBL और MCLR टाइम पे चेंज हुआ, करेक्टली अपडेटेड है नहीं, तो बैंक से वो सर्कुलर भी मांग लेना साथ के साथ आपका रेट्स कब कब मॉडिफाई हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर साल कहते थे, बड़ी क्वेरीज आती थी इसके अंदर, फ्रीक्वेंट रिन्यूअल अभी ने लास्ट ईयर LFR में डाल दिया और इसका सर्कुलर भी इशू कर दिया। सर्कुलर इशू किया 21 अगस्त 2020 का, फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स आर नॉट परमिटेड। होता क्या था रिन्यूअल में, एक शीट बनती थी, उसमें 50 अकाउंट है ड्यू फॉर रिन्यूअल, लिस्ट बना देती थी, GM को मार्क होती थी एंड दे यूज्ड टू राइट ऑल अकाउंट स्टैंड रिन्यूड, GM साइन कर देता था और सिस्टम में रिन्यूअल हो जाता था। व्हाट इज दिस? What is the renewal mean? Renewal mean we should get the balance sheet, we should get the profit and loss, financial data, projections, their operation should be recorded, so physical verification, all these things that has to be done. Nothing has been done, and in the system only pressing a button accounts were renewed. This was happening, and that is why RBI has issued a circular, and they have found what was happening in the banks. They have given in the circular this observation and this resolution. What are the observation? Frequent repeated ad hoc renewal of credit value instead of regular review. होता क्या था, हर 3 दिन के बाद शॉर्ट रिव्यू कर देते थे, जो हमने वर्ड सुना है। That is not allowed. अब ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के बाद अकाउंट अगर नहीं होता रिन्यूअल एमपी हो जाता है। मैं ज्यादा 2 शॉर्ट रिव्यू और कर दूंगा, ये थोड़ी है शॉर्ट रिव्यू के बेस पे उनको 4-4, 5-5 साल की लाइफ में लीज पे दे दूंगा, आप करते रहो और मजाक बनाते रहो इसका। RBI has plugged it last year. So this is what non-capturing and inaccurate capturing. Inaccurate capturing वही है, without renewal बटन प्रेस कर दिया, अकाउंट सिस्टम में रिन्यूअल हो गया। Non-coverage of the renewal in the concurrent audit. So RBI has said it. Bank should draft their methodology of the renewal. Keep the circulars ready. Auditor should go there, ask their circular and see whether it has been done or not. Bank has been asked to avoid frequent and repeated ad hoc without justifiable reason. RBI ने clear mandate दे दिया, but point is this: we should read this circular and use it for the audit. Next comes whether the correct valid credit rating is there or not from the RBI accredited credit rating agency. RBI से कुछ अपॉइंटेड एजेंसी हैं जो बड़े बड़े केसेस में रेटिंग करती हैं। इतने बड़ी कंपनीज के कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, फिच है, केयर है, क्यूसिल है, इंडिया रेटिंग है, स्मेरा है, इन्फॉर्मेटिक है, इकरा है। So they are appointed by Reserve Bank of India to do the rating. They give the rating A, B, C, D. According to that, they analyze what is the good working. It's a AAA rating. It is a very good. अगर वो rating down है तो वो उसके अंदर देते हैं। Now first of all we should ask what is the bank policy. In which cases we have to take this ratings from the rating agencies. Whether in the required cases as per the policy the rating has been taken or not. भाई किसमें लिया किसमें नहीं लिया, किसी में नहीं लिया तो अपने रिपोर्ट कर दो, पर जिनमें लिया whether it is a valid or not, suppose it is expired, then I should say it is an invalid rating. So that is what we should give. And third thing, where the rating is down, at least read the report. Why it is a down, we should come to know. There is a possibility there is a bad debts or account is not performing well, that is why the rating is down. Whether it is impacting my working, my reporting, my classification, so that benefit we can take from that. These are the specific details applicable to the large cases. Buyback of the shares. RBI guideline does not permit the financing for buyback of the share. I am telling you there is a circular for that. There is a master circular of the restriction of the loan and advances. अगर आप उसको पढ़ेंगे जुलाई 1, 2015 का सर्कुलर है, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि बायबैक के लिए लोन नहीं हो सकता। अब पॉइंट ये आता है, हम ये सोचते हैं व्हाई द आरबीआई हैज टेकन दिस क्लॉज ओवर हियर, जबकि आरबीआई परमिट ही नहीं करता उसको। ये भी तो हो सकता है बैंक ने लोन एक्स पर्पस के लिए दिया हो और यूज कर लिया हो वाई पर्पस के लिए, बायबैक के लिए, और बैंक को पता ही नहीं लगा हो। जरा जब हम ऑडिट पे जाएं बैंक से एक लिस्ट मांग लें, बहुत कम केसेस होंगे इस तरह के। इन हाउ मेनी केसेस बायबैक हैज टेकन प्लेस, एक अंडरटेकिंग ले लीजिए बात,
वहां से आपको निकल के आ जाएगा किस किस केस में बाईबैक हुआ है. बाईबैक हुआ है, देन वी हैव टू सी हाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड गिवन बाय द बैंक हैज बीन डन. बाईबैक के लिए अपने पैसा लिया है या बैंक का पैसा लिया है. और रिस्ट्रिक्शन के लिए एक और बता दूं, एक और सर्कुलर आया है रिजर्व बैंक का. इट इज कम ऑन जुलाई 23rd 2021. वहां पर लिमिट बढ़ा दी है when bank finance to the directors of the other banks. पहले वो लिमिट 25 लाख की थी. I think this is increased now subject to certain condition to 5 crore rupees. Regularly restrictions 5 crore rupees. Yes, it is a financing to board of director, management committee, banks, other banks. Heading is director of other banks. So that limit has been changed. Next comes document is not so important. Leon, that is not RBI, that is not so important. Now this is come, there is one clause very important, is the DP properly computed? That is very important. That is asked from us. And in the large cases, we must see the computation of DP has been correctly done or not. We should obtain the stock statement. We should take the stock audit report, see what the DP is coming as per the bank system. Criteria is to be reduced or not. What is the bank policy in this regard? After that, in the system, the DP has been correctly updated or not. That is to be seen. If the DP has been wrongly updated in the system, then account will not be becoming overdue as per the system, and account will not be classified as NPA. So these points we should take care of it. What is the bank policy? What is the stock statement? How the DP is being calculated, and whether it is being correctly updated or not. But in the large cases, again, threshold, this is a specific detail. That is what we have to see. Last audited financial statement received or not, that we are verifying already. Whether there is a system of auditing. Stock audit, जो चोपड़ा जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया, where the stock audit was conducted but no action was taken. How the auditor will verify no action was taken? जब तक हम रिपोर्ट पढ़ेंगे नहीं और उसकी कंप्लायंस चेक नहीं करेंगे, तब तक तो हमें यही नहीं पता लगेगा उस पे एक्शन लिया है नहीं लिया. So it means we have to read the stock audit report, see their compliances, see what are their adverse comments, whether it is affecting my DP calculation, and after if DP impact is taken, account becomes NP or not. So all these things we have to see. And one thing is non-corporate clients. What is the limit? Last time, earlier there was a limit. Now the audit account limit has been removed by Reserve Bank of India, but it said as per the bank policy. Now we should ask, what is the bank policy in this regard? Due diligence report. If you see the institute guidance note, there are 5 or 6 circulars have been given over there, and they are giving since long. But in LFR it was not there. Last year it was added. We should see the due diligence reports have been taken. What are the adverse comments in that? So as per the policy of the Reserve Bank of India, these are the some circulars in 2008, 2009, 2012, and the transfer of account from one bank to another bank. So next is, this is very important point, whether there is substantial deterioration in value of security in the financial year as per the last valuation report. Rajesh ji, how much time we have? Rajesh ji. जी भाई साहब, जी सर, जी सर. कितना टाइम चाहिए आपको है अपने पास? मेरे को तो कोई टाइम नहीं चाहिए, जब आप आदेश करोगे तब मेरे को तो चलिए ठीक है सर, LFR में कह देता हूं. जी सर. Point is this complete LFR is linked with the prudential guidelines. मैं आपको पहले ही बताया, अगर हम इसको कर लेते हैं तो मैं कहता हूं NPA की कंफर्मेशन हमारी पूरी रिजर्व बैंक इस LFR में ले रहा है. Now this is what, whether there is a substantial deterioration. Prudential norm के सर्कुलर में, IRAC norm के क्लॉज 4.2.9 में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है account will become NPA if there is a fall in the value of security more than the 50%, then it should be classified straightforward to the doubtful. If the value of the security is less than the 10% of the outstanding value, then it is a loss asset. If it is a prop, 100% provision to be made. Now here that is the same thing. Substantial deterioration. वहां तो 50% और 10% दे भी दिया, यहाँ तो 50% नहीं दिया. Substantial. Now it can differ from case to case. किसी केस में 10% भी substantial हो सकता है, किसी में 20 भी substantial हो सकता है, किसी में 30 भी substantial हो सकता है. So when we report it here, these comments, see क्या हमारे हिसाब से अकाउंट NPA बनता है
अगर yes, then we should give. We should comment about the red flag policy. बैंक से पहले दिन ही लिख के रेड फ्लैग पॉलिसी उनकी मांगो। और आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है जुलाई 1, 2016 का 8.3.4 में किस किस अकाउंट को हम रेड फ्लैग कह सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जिसे कहते हैं। इसमें कोई चीज नहीं छोड़ी उस सर्कुलर में। डिफॉल्ट इन अनडिस्प्यूटेड पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज, बाउंसिंग हाउ वैल्यू, frequent change in scope, foreign bill remaining outstanding, delay observed in payment of outstanding dues, invocation LC, मेरा ख्याल 25-26 around 42 early warning signals दिए हैं. And what RBI has said, bank has to formulate their policy on the basis of this. So in which cases red flag instruction has to be given. So this is what we have to see. Now first we should ask, what is the bank policy in this regard? Number two, whether as per policy red flag account had been declared or not. क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं हमें पता लगता है ये अकाउंट एनपीएम एनपीए डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सर्टेनली रेड फ्लैग है तभी तो एनपीए कर रहे हैं, और बैंक ने उसको रेड फ्लैग डिक्लेयर नहीं किया। और जो रेड फ्लैग डिक्लेयर किया है जरा उसकी भी लिस्ट ले लीजिए, क्या वो एनपीए बनता है या नहीं बनता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टच इट अपॉन हियर। नेक्स्ट हम 5 लार्ज स्टैंडर्ड अकाउंट्स जो है उनके अंदर एडवांस कमेंट, दिस इज स्पेसिफिक डिटेल। नाउ यू सी दिस वन, has the branch identified classified advances into standard, substandard, doubtful, loss through computer system, आगे एक वर्ड है without manual intervention, और नीचे मैं आपको सर्कुलर दे रहा हूँ सितंबर 14 का। ये सारी वो स्टोरी है जो इस बार आरबीआई ने कंटिन्यूअस वाला जो सर्कुलर डाल दिया, पूरा लिंक कर दिया एलएफएआर से। नाउ हियर ये ऑडिटर को कैसे पता लगेगा, जब हम ब्रांच में जाते हैं ब्रांच से कहते हैं एनपीए की स्टेटमेंट दो, सर अभी हेड ऑफिस से आई नहीं, सर टुमारो वी विल गेट इट, डे आफ्टर टुमारो वी विल गेट इट, आफ्टर 2 days दे विल प्रोवाइड कंप्लीट स्टेटमेंट टू अस। देन वी शुड आस्क द क्वेश्चन कि सर इसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं हुई है, ये सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम जनरेटेड है या नहीं है। द रिप्लाई विल बी, सर वी आर नॉट डूइंग दिस, इट विल बी डन बाय द कॉर्पोरेट ऑफिस। Why I am auditing the branch, I want that reply in writing. If we are not getting it or an audit trail, because as per this circular, which I am telling you September 14, 2020, any manual intervention has been done in computing NPA classification or SMA, bank should keep that log with them and provide to the auditors. This is my right. We should ask it. If they are not giving it, give the disclaimer or suitable qualification in your long form audit report about this. Next comes, which I was telling you, इस बार सर्कुलर में सब चीजें लिंक कर दी, SMA 0, SMA 1, SMA 2 और NPA क्लासिफिकेशन। अगेन सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, क्लास में आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, 3, 4, 5 जो इस बार का आया हुआ है। सो दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस व्हिच वर। और देखिए अभी आप, मैंने इससे पहले रीस्ट्रक्चरिंग डिस्कस किया था, क्यों कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में एनपीए क्लासिफिकेशन का सेपरेट पार्ट है ये, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी कवर कर दिया। 3 पॉइंट दे दिए रीस्ट्रक्चरिंग के, वेदर द ब्रांच हैज रिपोर्टेड अकाउंट रीस्ट्रक्चर्ड और रीफेस्ड ड्यूरिंग द ईयर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यहां पर आ गया। मैंने आपको अभी बताया एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग, कोविड-19 रीस्ट्रक्चरिंग, आईरेक नॉर्म आईरेक नॉर्म के हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग, तीनों रीस्ट्रक्चरिंग के यहाँ पर पॉइंट है। स्ट्रेस एसेट्स में क्या गाइडलाइंस है, स्ट्रेस एसेट आती है whether they have reported timely to the corporate office, अगर स्ट्रेस हुआ फिर रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, रेजोल्यूशन हुआ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। सो दीज आर द ऑल गाइडलाइंस वी हैव टू सी एंड देन वी शुड कमेंट इट अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस। दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट कम whether the upgradation of the NPA is in line of the RBI guidelines. Upgradation की जो lines नहीं आई हैं guidelines which we have already discussed, please comment here about this. If we disagree with the upgradation, we should give comment and NPA तो। Whether there are any account where the process under IBC is mandated, किसी के बाद extra large या बड़ी branch आ गई, ये उसी के लिए applicable है। क्या कॉर्पोरेट ऑफिस ने आईबीसी के लिए दिया है कि इसको मैंडेट के लिए और इन्होंने एबीसी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करे, दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव। या किसी और लेंडर ने किया है हमने नहीं दिया, तो हमें बैंक से डिटेल मांगनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कमेंट इन दैट। ईसीजीसी सीजीटी में सारे आ गए इसके अंदर।
वो क्या रहा था, हम जब एनपीए की क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें ईसीजीसी गारंटेड को 100% सिक्योर्ड में दिखा देते हैं, इट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट गारंटी। पर हो क्या रहा था, कुछ केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, हम तो देखते हैं कि चलो एक्सपोर्ट का केस है, हो गया काम। और जरा चेक कर लो, अगर क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं और नहीं आया पैसा, then in that case rejection, so we have to be very careful, we cannot show them as a secured by government guarantee, so we have to make, क्योंकि फिर वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा, उसका प्रोविजन उस हिसाब से बढ़ जाएगा। एक कुछ केसेस इन्होंने दिए हैं, डिक्री वाले केसेस, दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव, डिक्री का क्या स्टेटस है, ये पूरा डाटा उन्होंने दिया है। एप्रोप्रिएशन एनपीए की गाइडलाइंस जो थोड़ी रिपीटेड है, जो फ्रॉम द ईयर्स चल रही है, आई एम नॉट रिपीटिंग, इफ देयर इज सेपरेट इशू दैट इश्यूज है बाय एनी मेंबर दैट वी विल टेक। एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है इसके अंदर, जो सेंट्रलाइज ऑफिसेज हैं डॉक्यूमेंट चेक है, हम वहां पे डॉक्यूमेंट चेक करने जाते हैं, हमें वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, तो आरबीआई ने कहा अगर आप सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर पे गए, आपने डॉक्यूमेंट चेक किया और आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, तो जरा उनकी लिस्ट दे दो। हमारा काम कम से कम ये जरूर है कि हमने एक प्लेस दे दिया, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, यू शुड गिव इन द लॉन्ग फॉर ऑडिट रिपोर्ट। एक यहाँ पर है लिस्ट ऑफ बोरोवर्स विद डिटेल ऑफ एलसी डिवॉल्व और गारंटी इन्वोक्ड ड्यूरिंग द ईयर। पहले ये वर्ड होता था एट द ईयर एंड, ध्यान करना इस वर्ड को, ये ईयर एंड नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर। तो बैंक से हमें ऑडिट ट्रेल लेनी पड़ेगी, बताओ पूरे साल के अंदर कितनी एलसी डिवॉल्व हुई और गारंटी इन्वोक हुई, दैट लिस्ट शुड बिकम द पार्ट ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। जरा उनको पढ़ लेना, उनको डेबिट किस ढंग से करने, क्योंकि आयरेक्ट नॉर्म के अंदर लिखा है इफ एलसी डिवॉल्व और द बीजी इन्वोक, इफ द फंडिंग हैज बीन डन, इट शुड बी डेबिटेड टू द main principal operating account. If it is in a part in a separate account, it should be treated as a part of the principal operating account for classifying the account NPA. Then we should see what is happening and how it is being done. At last, इसमें बड़ा important point एक और दे दिया कि interchange in the fund base and non funds limit तो नहीं हो रही। भाई एक पार्टी को 20 करोड़ रुपए की non funds लिमिट दे दी, उसकी एलसी डिवॉल्व हो गई। अब डिवॉल्व होने के लिए पैसा आया, पैसा है नहीं पार्टी के पास पे करने के लिए, तो बैंक पे करेगा। बैंक ने क्या करा, जो 20 करोड़ की लिमिट डिवॉल्व हो गई, 5 करोड़ वहां से कम कर दी और 5 करोड़ को इंटरचेंज करके फंड बेस में कन्वर्ट कर दिया और एलसी डिवॉल्व करके उसमें पार्क कर दी। दिस इज नॉट परमिसिबल। इफ इट इज हैपनिंग, वी शुड रिपोर्ट इट एंड गिव अ सुटेबल रिमार्क और एनपीए वेयर व्हाट वी थिंक। ये कुछ ऑडिट ट्रेल के केसेस है जनरल बैंकिंग के, अदर देन एडवांसेस। सो दिस एफसीएनआर-बी की अगर वो अकाउंट एनआरआई है, बैंक शुड ऑब्टेन एविडेंस फॉर दैट। तो हमारे को वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो रहा है, वी शुड आस्क ऑडिट ट्रेल फॉर दैट। मिनिमम बैलेंस आरबीआई का सर्कुलर है, आप पढ़ लीजिएगा, 20 नवंबर 2014 को मिनिमम बैलेंस पे के ऊपर नहीं मेंटेन होते तो क्या चार्जेस लगने हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, एक बैंक ने कहा 20,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करोगे तो 1,000 रुपए चार्जेस लेंगे, एक पार्टी ने 19,000 मेंटेन करा, उसके 1,000 रुपए लगा दिए। आरबीआई ने कहा ऐसे नहीं कर सकते, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेविंग अकाउंट। आरबीआई ने कहा 20,000 के लिए 1,000 रुपए ले रहे हो ना, तो 19,000 के लिए कितना लोगे, उसका प्रोपोर्शनेट लो भैया, 1,000 शॉर्टफॉल ना, 1,000 का प्रोपोर्शनेट। So that is what the RBI has issued the instruction. So this is what the RBI said. We should see on the test check basis compliance has been done or not. NPA norm के अंदर sorry interest accrued on overdue deposit. So बैंक provision करते हैं, बैंक आपको कहेगा हेड ऑफिस में प्रोविजन हो रहा है, give a suitable remark, it is that at head office. RBI ने अभी जुलाई 2, 2021 को एक सर्कुलर निकाला, उसके अंदर कर दिया ओवरड्यू एफडी के ऊपर इंटरेस्ट क्या लगेगा, जो उस एफडी का रेट है चल रहा है वो, या सेविंग whichever is less, या कॉन्ट्रैक्टेड डेट अगर कम है तो कॉन्ट्रैक्टेड डेट होगा। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टेड डेट्स बहुत हाई होते थे तो सेविंग पे इंटरेस्ट का प्रोविजन हो जाता था। सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन डन। गोल्ड बुलियन मेरा ख्याल से ये हमने क्लॉज डाला हुआ है एलएफआर में, और ये उन्हीं ब्रांचेस को एप्लीकेबल है जो गोल्ड बार्स होती है। आज की तारीख में ब्रांचेस गोल्ड बार सेल नहीं करते, साउथ में ब्रांचेस मिल जाएंगी जहां पे कुछ पुराना स्टॉक पड़ा होगा। सो दीज टू क्लॉजेस आर एप्लीकेबल टू देम। एक इसके अंदर whether there are any software system manual or otherwise used at a branch which is not integrated। जरा आईएस रिपोर्ट देख लेना, अब आपको पता कैसे लगेगा ब्रांच में कितने सॉफ्टवेयर हैं। मैं तो ब्रांच से लिखवा के लूंगा भाई आप बताओ कितने सॉफ्टवेयर हैं, वो कहते हैं 10 सॉफ्टवेयर हैं,
तो मैं ये देख लूंगा 10 इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है देन आई विल गिव द रिपोर्ट, बट आई हैव टू टेक द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट whether all the provide the list of the softwares are there which are not integrated, or IS report we can take about this, because इसको इंस्टीट्यूट ने भी टेकअप किया था, आरबीआई ने मॉडिफिकेशन नहीं किया, then there is no option left with us in this। एक है एक्सेप्शन रिपोर्ट। हर बैंक के अंदर डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट्स निकलती हैं। बैंक से पहले दिन लिस्ट दीजिए एक्सेप्शन रिपोर्ट की, सैंपल डेट दीजिए, उनकी बताइए हमारे को ये एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखाइए। आरबीआई की गाइडलाइंस है एक्सेप्शन रिपोर्ट हैज टू बी डेली जनरेटेड एंड वेरीफाइड। ध्यान करना वर्ड को, वेरीफाइड। जनरेट कर ली, वेरीफाई नहीं करी, इट इज ऑफ नो यूज। सो जरा उसको देख लीजिएगा। और अगर वेरीफाई करी है तो उसके बाद उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, एडवर्स कमेंट्स, उसके बारे में तो वो तो मैं जब दूंगा जब उन्होंने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। जरा राइटिंग में मांग लेना, हमको रिकॉर्ड चाहिए। इफ दे विल नॉट गिव द रिकॉर्ड, गिव योर कमेंट ओवर। Whether bank has a laid down procedure for manual intervention generated in the data. Now this one is manual intervention in NPA classification. बैंक में और भी तो बहुत ट्रांजैक्शन होती है मैनुअली। बैंक कहता है कि मेरा इनकम के अंदर जो भी काम होता है इनकम का, वो सारा सिस्टम जनरेटेड होता है। एक पार्टी को लोकल एंड डबल लग गया, बैंक उसको रिवर्स करेगा, वो मैनुअल एंट्री डाल के की और उन्होंने, मुझे कैसे पता लगेगा? मेरे पास ऑडिट टेल होनी चाहिए ना। सेम वे इंटरेस्ट एक्सेस लग गया, बैंक ने उसको रिफंड किया। उसके दो तरीके हैं देने के, या तो सिस्टम में करेक्ट कर दो और या मैनुअली रिवर्स कर दो। लेट अस आस्क द लिस्ट ऑडिट टेल। फॉर एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू मैनुअल डेबिट टू इनकम, manual debit to interest paid, but we have to ask some audit trail from the bank. Then on that basis we should give a comment on this reports. एक और आया data integrity, institute has taken up with Reserve Bank of India। ब्रांच लेवल पे डाटा इंटीग्रिटी को कंफर्म करना कहां तक लॉजिक है, और क्या करें? रिजर्व बैंक नहीं माना। इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन दिया इसमें को लेके। पॉइंट क्या है? फर्निश योर कमेंट्स ऑन डाटा इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग डाटा एंट्री, चेकिंग करेक्टनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। ये मैं कहां से चेक कर लूंगा? ये तो सेंट्रल ऑडिटर भी नहीं चेक कर पाई। पर लास्ट ईयर हमने ऑडिट किया, फिर मैं जहां तक समझता हूं अपने एक्सपीरियंस पे आई कैन शेयर विद यू। बैंक्स में कंकरेंट ऑडिट है कुछ ब्रांचेस में, उनकी रिपोर्ट लीजिए, वेदर दे हैव गिवन एनी एडवर्स रिमार्क्स ऑन दैट, मेक इट अ पार्ट ऑफ दैट। एक हर बैंक्स के अंदर मित्रा कमेटी रिकमेंडेशन की है, एवरी बैंक हैज टू फिक्स अप ए थ्रेशोल्ड लिमिट, above that all transaction to be re-verified by the branch official and made the correct timely correction in that. That is also the data integrity checking at the bank level। जरा उसकी रिपोर्ट्स ले लेना, बैंक्स में अलग अलग नाम है इसके। तीसरा, जो हम ऑडिट करके आते हैं, पूरा ऑडिट कर लिया, पूरे ऑडिट करने में क्या हमको कुछ ऐसा नजर आया कि जो डाटा हमको प्रोवाइड किया हुआ सिस्टम जनरेटेड वो गलत था, या मास्टर डाटा गलत फीड किया हुआ है, या सिस्टम से कुछ रिपोर्ट्स गलत जनरेट हो रही हैं। एक बैंक के अंदर हमें मिला, मैं आपको केस शेयर कर सकता हूं। एनपीए की स्टेटमेंट निकली, ओवरड्यू की स्टेटमेंट, लोन चल रहा है 4 साल से, लास्ट ईयर का डाटा है उसके अंदर दिखा रहा है वो 3 साल का, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू फॉर पेमेंट 36, ओवरड्यू 24, बैलेंस रिसीव्ड 24, ओवरड्यू 12। लास्ट ईयर के डाटा तो ये था। जब इस साल का डाटा जनरेट हुआ, उसने उसको क्यूमुलेट नहीं किया पिछले साल के डाटा को, इसी साल का दिखाया। इंस्टॉलमेंट ड्यू 12, रिसीव्ड 9, पेंडिंग 3। नाउ दिस इज अ incorrect data which I personally feel, so I have given make a suitable place over there with the disclaimer for this. So whatever on the basis of the complete audit, if we find something, make it a part of it there। एक इंटर ब्रांच, मैंने आपको पहले बताया, कैश का केस बताया, इंटर ब्रांच का हर बैंक में रिकंसिलिएशन निकलता है, हर ब्रांच दूसरी ब्रांच पे एंट्रीज रेज करती है। बैंक हैज टू रिस्पोंड ऑल द एंट्रीज पर्टेनिंग टू दिस ईयर ड्यूरिंग दिस ईयर। जरा वो रिपोर्ट जरूर मांगिए, अगर नील की रिपोर्ट है देखिए उसको। अगर किसी एंट्री ने डेबिट रेज किया, मैंने खर्चा बुक नहीं किया, इट इज डिजर्व फॉर एमओसी फॉर दिस। सो दीज आर द सम इश्यूज। फ्रॉड्स, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिटेक्टेड, क्लासिफाइड, ब्रांच ने डिटेक्ट किया, ब्रांच से डाटा लेना है। वेदर सस्पेक्टेड और लाइकली फ्रॉड केसेस आर रिपोर्टेड टू हायर, उसकी लिस्ट लेनी है, उनका प्रेजेंट स्टेटस है क्या है वो देना है, और अपने कमेंट्स देने हैं।
रिपोर्ट में आरबीआई ने ये दे दिया। केवाईसी एएमएल मैं आपको बता दूं व्हाट इज दैट बेसिकली। लास्ट ईयर हमने ऑडिट किए केवाईसी के अंदर, स्टैट्यूटरी ऑडिट में हर कैटेगरी के कुछ अकाउंट उनको दे दिए जो नए ओपन है, एंड वी शुड आस्क प्लीज प्रोवाइड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, व्हाट इज द बैंक पॉलिसी, एंड वी हैव वेरीफाइड इट। उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन सिस्टम है सब। तो केवाईसी तो हो गया। पॉइंट आ जाता है एएमएल को लेकर के। एएमएल इज अ वेरी वाइड टर्म। आपने जितना चेक किया यहाँ पर दीजिए, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवर चेकिंग टू दैट एक्सटेंट। बैंक के अंदर एसटीआर सीटीआर रिपोर्ट मांगिए। बैंक में मेरे को तो एक बोल दिया जी एसटीआर रिपोर्ट तो जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। मैंने कहा आप राइटिंग में दे दीजिए, उन्होंने राइटिंग में दे दिया, मैंने एलएफआर में लिख दिया। सीटीआर आपको मिल गई, कुछ सैंपल बेस पे चेक कर लीजिए, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है दीजिए। बिकॉज एज पर एएमएल गाइडलाइंस, बैंक शुड इंश्योर दैट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड कमेंसुरेट विद द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूँ कुछ केसेस। भाई एक ट्रांसपोर्टर है, वो डेली कैश निकालता है, यस नेचर ऑफ बिजनेस इज लाइक दिस, क्योंकि ट्रिप के लिए उसको कैश देना होता है। वाइन शॉप है, डेली कैश जमा होता है, क्योंकि उसका तो बिजनेस यही है, कैश आएगा तो डेली जमा होगा कैश। सो नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर आपको सस्पिशियस लगता है, आपके कमेंट है, प्लीज मेक इट। सो बट वी शुड mention to what extent AML we have covered it over here. So these are the issues. Thanks a lot to all of you members for having the patience hearing. I have touched it upon. Important circular list, sir, I will provide it to you and share with the members. Now, I think that is a great, the 244 members are still there. I think it is a big achievement for Ajay ji, for you. Tell me any issue, any query. सर बहुत थैंक यू वेरी मच। 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, तो क्विकली ले लें सर इनको भी। ले रहा हूं सर, ले रहा हूं। पहला है Manish Gupta, use there are 7-day grace period for the payment of installments, and if the payment is received with the, sir, in my opinion there is no grace period. This is first time I am listening for you. If you also see your bank, if they have verbally telling you or in the writing it is written or in the sanction RBI, that is why it is clarified this year in the circular. There is a misinterpretations, and it is clarified that bank has to write in the agreement all these things. So please, I think there is no bank is having No grace 7 period. days or this grace period. Whether default is counted, restructuring account for upgradation, no, go strictly for the dates. Nothing is that. In case of the agricultural loan, interest applied, but debited to account after 6 months. What is the date of? Sir, agriculture land, now I am explaining you because time is short. That is why I am not upon. Agriculture guidelines is what? First of all, we should see what is the guidelines. If account is overdue for the 2 short crop season or 1 long crop season, it will be classified as an NPA. First of all, we see the sanction letter. As per the sanction letter, when it becomes due for payment, as per RBI guidelines, if it is not become due for payment and payment is not done as per the sanction letter, on that date it will become overdue. Whether interest is applied for 6 months or 1 year. Yes, in agriculture loan, the system is that it is applied. RBI is said if it is not received within 90 days from the interest applied. The word is, it is clearly mentioned this time. So please look into that. And if it is become overdue, from that date, you should take the period of 2 short crop season or long crop season, then it will become NPA. Next is, if moratorium clause is not at the time of sanction and later, sir, later for I have circular it is clearly mentioned in case of the restructuring and DCCO, go to the separate guidelines for the project under implementation and restructuring. But this clause is applicable only where in the sanction when it is given, that is mentioned over there, when it was not in the financial difficulty. For restructuring, there is a separate guidelines. Go as per that guideline. That is exception is given over there. What will be the status of OD availed against FD interest paid but not principal? In case of OD against FD, there is an exception of that. Any advance given against FD, KVP, IVP, and LIC, if the outstanding balance is more than the present value of these securities, then only account will be classified NPA, otherwise not. So that is a exception for that.
In the blanket provision, is blanket provision required 10% for restructured account in case of all restructure? No. If the loan is sanctioned in this scheme, then it is a 10%. In the last year scheme, it was given in the 5%. For old cases, 5% will continue, and there is given, I have not gone in the detail, further they have given when it can be reversed. If you read the circular, reversal clause is also given. 10% is given for these cases only. In blanket provision, outstanding balance 10% सीधा उसका provision होता है. और बताइए sir, all the queries have been taken. एक लास्ट Data क्वेश्चन है सर. integrity, data integrity, whether MIS data is sir, point is this, it is everything is covered in this, even MIS is covered in this. So point, that is why I told institute has taken, because I was the part of that team also. So institute has taken up with the Reserve Bank of India, sir, please remove it at the branch level. But ultimately, we should mention to what extent we have done the checking. पर ऐसा नहीं करना कि checking भी नहीं करें, कहे जी नहीं जी ये तो हो नहीं रहा. So that will not work. Sir, what are STR, suspicious transaction report and cash transaction report? CTR gives the high value cash transaction reports, because AML bank has to report that all the transaction above 10 lakh rupees in a sum up. There is a clause of this. Thank you. Thanks a lot to everyone. Thank you, Rajesh ji. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful deliberation on the subject and taking in each and everything from circular NPLFAR. But I request our Ashwani Katpalia ji, former convener of this study circle, my elder brother, to present a formal vote of thanks. Over to Katpalia ji. Thank you, Rajesh ji, giving me the opportunity to thank two great personalities and great persons. मेरे को नहीं पता भीषम पितामह चोपड़ा जी जैन साहब को बोल गए और उनको किसने बोला, संजीव जी ने बोला. भीषम पितामह कौन है वो मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देम, बट बोथ आर साइक्लोपीडिया. Yes, yes, sir. ठीक है, तो ये मतलब यू जो मतलब whatever whenever you take up a bank audit, if you don't listen to them, you can't do it. Most of the concepts are cleared and wonderful deliberation. Right, Chopra ji has rightly said, cash credit account. जितने भी frauds होते हैं वहीं से शुरू होते हैं और bill discounting से शुरू होते हैं. ठीक है, Jain साहब will watch for it and endorse it. And secondly, Jain साहब ने जो लफार के ऊपर क्लास बाय क्लास सर्कुलर्स को जो जैसे एक्सप्लेन करके हमें बताया कि what to do, and both those three circulars are very important for conducting the audit this time, and we have to be very cautious. और लफार के मतलब लफार पहले क्या होता था, हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह whatever में भी देखा जो भी है, बट नाउ लफार इज द, अगर आपने लफार प्रॉपरली कर लिया तो बैंक ऑडिट आपका हो गया. एंड बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कंडक्टिंग. एंड आई थैंक यू मिस्टर जैन फॉर गिविंग क्लास बाय क्लास मतलब पॉइंट बाय पॉइंट एंड क्लियरिंग आवर ऑल कंसेप्ट्स फॉर कंडक्टिंग द एंड. एंड आई थैंक यू फॉर योर वंडरफुल डेलिब्रेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Katpalia ji. Thank you, Jain Saab. Wonderful deliberation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks to all.